Krishna-katha Krishna-katha His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Jai Vishnu-pad Paramhamsa Parivraj Gacharya Shishimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Namacharya Srila Hari-katha Thakur ki Jai. Ramsikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Shri Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund, Radha Kund, Giri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Mayapur Navadvip Dham ki Jai. Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki Jai. Ganga Maya ki Jai. Jamuna Maya ki Jai. Bhakti Devi ki Jai. Tulasi Maharani ki Jai. Shri Shri Gaurnitai ki Jai. Shri Shri Krishna Balaram ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev, Lady Subhadra Devis ki Jai. Shri Shri Radha Gopinath ki Jai. Shri Shri Radha Gopalju ki Jai. Shri Shri Radha Madhava ki Jai. Premanam Sankirtan Jagya ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Gaur Premanam. All glories to the Sambhuddha devotees. All glories to the Sambhuddha devotees. All glories to the Sambhuddha devotees. All glories to Shri Guru, Shri Gauranga Mahaprabhu, Srila Prabhupada, Shri Gurudev. Hare Krishna. Who's leading the kirtan? Kirtan कौन lead कर रहा था? Who? mostly. I thought there was a funeral. I thought somebody died. मुझे लगा कोई मातम मना रहा हो, कोई मर गया था. I was crying, you know. मैं रोने लगा था. It sounded very dark and, you know, somebody died, you know. ऐसा लगा कोई बहुत ही अंधकार या कोई मर गया हो ऐसा मातम मनाया जा रहा. And then after Sanatan, then you took over. और सनातन के बाद And you continued the funeral. मातम मनाना जारी रखा. Then I came out, all these enthusiastic devotees chanting at the funeral. मैंने देखा बहुत जोश से लोग जो है मातम मना रहे हैं. Is that too cold for your back? क्या आपको बहुत ठंड लग रही है पीछे? You're prepared tonight. आज तैयारी करके आए हैं. All right, so what is our topic? तो क्या है हमारा आज का विषय? I'm always talking. I never ask you what do you want to talk about, so I feel bad sometimes. तो मैं हमेशा बात करता हूँ. आप लोगों से पूछता नहीं आप लोग क्या बात करना चाहते हैं. मुझे कई बार बुरा लगता है. So what do you want to discuss? आप लोग क्या बातचीत करना चाहते हैं? Any question? कोई प्रश्न है? Any problem? Anything you've always been trying to think about and trying to understand? कोई भी चीज जो आप बहुत समय से समझने का प्रयास कर रहे थे. Mataji, welcome. माता जी आपका स्वागत है. Hare Krishna. हरे कृष्णा. So please say, what are you trying to understand? तो आप लोग बताइए आप लोग क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं. And what is your question? क्या सवाल है आप लोगों का? Since you so enthusiastically raised your hand, बहुत उत्साह से अपना हाथ उठाया. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Hare Bol. Hare Bol. Any other new people? कोई और नए व्यक्ति हैं मौजूद यहाँ? This means I have to behave tonight, right? आज की रात मुझे अच्छा व्यवहार रखना होगा. I'll try to be on my best possible behavior. मैं अपना जितना सबसे अच्छा व्यवहार रख सकता हूँ आज प्रयास करूँगा. I can't promise you anything, but I'll try. मैं वादा नहीं कर सकता कुछ भी लेकिन मैं प्रयास पूरा करूँगा. So, फिर I don't know. Give us a nice topic. एक अच्छा विषय दीजिए हमें. Why GBC call you? You see? I try to be nice. I try to avoid controversy. मैंने प्रयास किया कि मैं I just started saying I just want to be nice, right? और मैंने कहना शुरू किया था कि मैं अच्छा व्यवहार रखूंगा आज. Prabhu, you speak English, right? प्रभु आप अंग्रेजी बोलते हैं? ठीक है. And then what happened along the way? और फिर क्या हुआ रास्ते में? You have a microphone for her? My question is, Yes. Yeah. why GBC call you criminalist? Why they call me what? Criminalist.
Criminal. What? Criminal. Criminal. Criminal? I am too shocked. Maybe I should have picked the topic tonight. मुझे पूछ रहे हैं क्यों जीवीसी आपको अपराधी गतिविधि का कहते हैं, तो गुरुदेव बता रहे हैं लगता है मुझे खुद रिसर्च करना चाहिए। Yes. Because I heard this and I And you don't believed understand. it. No, I So now I have to explain how I'm not a criminal. huge offense for you, and I don't know what to do with this. Don't listen to criminals. माता जी कह रही है मुझे ये बहुत अपराध लगा आपके प्रति, तो मुझे क्या करना चाहिए समझ नहीं आया। गुरुदेव ने कहा कि आप ऐसे अपराधियों को मत सुनिए। Alright. Criminalist What? kill somebody. Do you kill somebody? Did I kill somebody? Yes, because Wikipedia I in don't Google. remember. I don't know if anyone died. माता जी पूछ रही है कि आपने मतलब अपराधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी की हत्या की You know, there's new people in this age. Did you kill anybody? यहाँ नए लोग आए और ये कह रहे हैं कि आपने किसी की हत्या की है। So you've given me a very high bar now. You know what I mean? आपने जो बार बहुत पहले से ही ऊंचा सेट करके रखा है। Actually, very low bar. असल में ये बार Right? बहुत So if नीचा I'm है। just a criminal killing people, it shouldn't be tough to get a little bit higher, you know? पहले मुझे अपराधी बता दिए गए हत्यारा, तो इससे ऊपर उठने में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। I don't know about establishing the absolute truth. That might take another class. परम सत्य को स्थापित करने के लिए तो दूसरी क्लास लेनी पड़ेगी। I wasn't ready for that question, इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं था। but you're listening to me every day for so long, right? तो काफी दिनों से आप मुझसे हर दिन सुन रही हैं। So didn't you pray to Krishna when you were in Poland and crying to Krishna to please give me association with somebody who can help me? तो जब आप पोलैंड में थी, आप कृष्णा से रो नहीं रही थी कि मुझे ऐसे भक्त का संग दीजिए जो मेरी असल में मदद कर पाए। Were you praying to Prabhupada like that? क्या आप प्रभुपाद से ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहे थे? And didn't you already have not very much hope or faith in all of the different people that you were meeting and listening to? और आपको बहुत आशा मिली, श्रद्धा मिली हमारे अलग-अलग लोगों से सुनकर। I think that's right. तो मुझे लगता है ये सही है। Were you satisfied with everyone who was trying to preach to you? और पहले जो लोग आपको प्रचार करने का मदद करने का प्रयास कर रहे थे, क्या आप उनसे संतुष्ट थे? Huh? Was everyone able to help you in their preaching? क्या सभी लोग अपने प्रचार के माध्यम से आपकी मदद कर पा रहे थे? They helped you? उन्होंने आपकी मदद की? Huh? Yes? So why you came? तो फिर यहाँ क्यों आए? Why you're not sitting there getting help from those gurus? तो उनके साथ बैठ के उन गुरुओं की मदद आप क्यों नहीं ले रहे? Why you came to me and want to surrender to me and asking, you know, for me to accept you as disciple? क्यों आप यहाँ मेरे पास आकर मुझे शरणागत करके मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए? Huh? Because I want this. Why do you want to? तो महाराज पूछ रहे हैं आप क्यों ये You're चाहते saying हैं? you're satisfied there, you're getting No, good. I am not satisfied there. Oh, you were? No. That's I am not. right. मैं Because उनके साथ संतुष्ट नहीं थी। I don't understand what you. You didn't understand me? No. Are you understanding me now? क्या आप मुझे आप समझ पा रही हैं? पहले नहीं समझ पा रही। Okay. ठीक है। So you are not satisfied there? तो यानी कि आप वहाँ संतुष्ट नहीं थे? No. नहीं। Because I am here. महाराज That's कह why रहे you're हैं, here. Yeah. इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। So are But you? my question is not I am satisfied or not as satisfied. I'm asking the questions now. माता जी को सिर्फ मेरा ये सवाल नहीं था, तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं अब सवाल पूछूंगा। All right, I'm asking the questions. अब मैं सवाल पूछूंगा। You made a point, आपने अपनी बात साबित की, so I'm answering your question. अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। And in my answering your question, I may ask you another question. और मैं आपको उत्तर देने के लिए आपको एक सवाल पूछूंगा। I have the right to do that. मेरे पास ये अधिकार है करने के लिए। Otherwise, you're not disciple and I'm not spiritual master. वरना आप शिष्य नहीं और मैं गुरु नहीं। Then why are you asking me questions? तो आप मुझे सवाल क्यों पूछेंगे? And how you'll listen to my answer if you don't accept me in that position? और कैसे आप मेरे उत्तर को स्वीकार करेंगे अगर आप मुझे उस गुरु के पद पे स्वीकार You नहीं think करेंगे? I'm just some madman, some criminal because
people said like that, then why will you ask me a question and seek my answer? अगर आप सोचेंगे कि मैं पागल आदमी हूँ या कोई अपराधी आदमी जो कुछ लोगों ने आपको बता दिया तो क्यों आप मुझसे उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे? This is not mine. Huh? This is not mine. It's not yours. No. I ask you because GBC calling like that, and my question is why. That's all. Krishna. तो माता जी सवाल पूछ रही हैं कि जीबीसी ने कहा है कि आप इस तरह के आपराधिक व्यक्ति हैं। मेरा ये बस इतना सवाल है कि I don't think like that, but I don't know. Well, if it didn't affect you, if you're taking it serious enough to ask me the question, तो महाराज गुरुदेव से सवाल पूछ रहे हैं, आपने उस सवाल को इतनी गंभीरता से क्यों लिया उन बातों को? वरना मुझे सवाल क्यों पूछा? Offense for you. That's why I ask you. माता जी कह रही हैं कि very important offense for you. ये एक गंभीर अपराध है आपके तरफ, आपके ऊपर, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। You see, I'm trying to understand and I'm preaching about how to go from mixed bhakti to pure bhakti. तो मैं यहाँ ये समझाने का और ये प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे आप मिश्रित भक्ति से शुद्ध भक्ति की तरफ जा सकते हैं। So that's the emphasis that I learned from my Gurudev from Prabhupada's books. और ये मेरे गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद की किताबों के माध्यम से मैंने सीखा। So my training and our emphasis is how to go from mixed bhakti to pure bhakti. तो मेरा प्रशिक्षण या मेरा जोर प्रचार का कैसे आप मिश्रित भक्ति से शुद्ध भक्ति की तरफ जा सकते हैं इसके ऊपर है। So it's like you're supposed to be in the calculus class, right? You're in the calculus class and you're asking how do I add 2 plus 2. तो आप कैलकुलस की क्लास में आए हैं और यहाँ आके आप ये सवाल पूछ रहे हैं 2 और 2 जोड़ क्या होता है? So what I'm trying to share, what I'm trying to explain, then I have to now explain how I'm not a criminal. तो मुझे अब वहाँ से आपको बताना शुरू करना पड़ेगा कि मैं एक अपराधी कैसे नहीं हूँ। And this is a serious inquiry. और क्या ये बहुत गंभीर जिज्ञासा है? As you've been listening to me for the last month, every single day. तो पिछले 1 महीने से हर दिन आप मुझसे सुन रही हैं। Do you not see I'm presenting Srila Prabhupada's books and teachings? क्या आप नहीं देख पा रहे कि मैं श्रील प्रभुपाद की किताबों और शिक्षाओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ? As it is, यथारूप में, to the best of my ability. अपनी श्रेष्ठ क्षमता के आधार पर। Do you see that that's what I'm doing every day? क्या आप नहीं देख पा रहे कि हर दिन मैं ये कर रहा हूँ? Am I telling you to go rob a bank somewhere? क्या मैं आपको कहा कि जाकर कोई बैंक लूटो? Am I asking you to be part of a conspiracy to kill people? क्या मैं आपको किसी विवाद का भाग बना के किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए कह रहा हूँ? Or am I trying to understand and emphasize how to pray to Krishna within your heart? और मैं इस बात पर जोर देने का प्रचार कर रहा हूँ कि आप अपने हृदय में कृष्णा को प्रार्थना करने का प्रयास कीजिए। Because he is the Lord of the heart, the Paramatma, Chaitya Guru. क्योंकि वो है हमारे हृदय में परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में। So I think that's what we're trying to emphasize is how to desire and convince Krishna we want to surrender and serve him. तो हमारा प्रचार या जोर यहाँ इस बात पे कैसे हम कृष्णा को आश्वस्त कर पाएं कि हम उनको शरणागत और उनको सेवा करना चाहते हैं। Prabhupada said if you can convince Krishna of your sincerity and seriousness to surrender to him. और प्रभुपाद बताते हैं अगर आप अपनी गंभीरता एक निष्ठा से कृष्णा को आश्वस्त कर पाते हैं कि आप उनको शरणागत उनकी सेवा करना चाहते हैं, then Krishna will understand that. तो कृष्णा इस बात को समझ जाएंगे। Because he's the witness and the judge. क्योंकि वो साक्षी है, वो न्याय करता है। And the first installment of Krishna's mercy, Prabhupada says, he'll send you a bona fide spiritual master. और कृष्णा की कृपा की पहली किस्त है कि वो आपको एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु भेजेंगे। That's Prabhupada's teachings, instructions, ये right? प्रभुपाद की शिक्षाएं, उनके निर्देश। So were you sincere and serious to want to surrender to Krishna? तो क्या आप बहुत गंभीर एकनिष्ठ थी कृष्णा को शरणागत उनकी सेवा करने के लिए? Was that your desire? क्या ये आपकी इच्छा है? Is that your desire? क्या ये आपकी इच्छा थी है? When you're sitting in Poland, are you telling Krishna, I want to surrender to you and render loving devotional service to you? आप पोलैंड में बैठ के कृष्णा से प्रार्थना कर रही थी कि मैं आपको शरणागत करना चाहती हूँ, आपको प्रेममय सेवा करना चाहती हूँ। Gurudev, this is not answer for my question. Because my ask is why GBC call you Mataji, you're not criminals? listening. You're not listening. You're not understanding me. तो गुरुदेव बता रहे हैं माता जी आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं, I मुझे don't सुन नहीं need रही हैं। explain. Only why.
and why these persons stay in his positions and Krishna is go away. And what? Why is Krishna allowing these offenders, Vaishnava aparadhis, why Krishna is allowing them to stay in their position? Because it makes it more fun. माताजी पूछ रहे हैं क्यों कृष्णा ऐसे अपराधियों को उनके पद में बने रहने दे रहे हैं? तो गुरुदेव बता रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत मजा आ रहा है. Makes it more interesting. इसको और दिलचस्प बनाता है फिर. If everybody was just pure devotee अगर सभी and लोग lover of Krishna, they would be in Vaikuntha. तो अगर सभी लोग कृष्णा के प्रेमी भक्त होते तो वो लोग वैकुंठ में होते. So there's all types of people here. तो यहाँ सभी तरह के लोग मौजूद हैं. All Not varieties. discrimination. Hmm? Not discrimination. Lord Chaitanya teaching. This one? What's your Lord Chaitanya teaching, not discrimination. Lord Chaitanya's teaching not to discriminate. Not to discriminate? Yeah. You shouldn't discriminate? तो माता जी कह रही हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हमें किसी के प्रति भेद नहीं करना चाहिए. तो गुरुदेव पूछ रहे हैं Not क्या हमें me, भेद नहीं Lord करना चाहिए? Chaitanya. All right, let me ask you a question. Did you come to my room in Russia and say you want to fully surrender and be accepted as a disciple? Yes. Did you say that? Yes, मैं आपसे एक it's सवाल me. पूछना चाहता हूँ कि आप पोलैंड से आए रूस में हमारे क्लास के कमरे में और मुझसे कहा कि आप मेरी शिष्य बनना चाहती हैं और पूर्ण शरणागत और सेवा करना चाहती हैं. And you said that Krishna was telling you that you should surrender as disciple, right? और आपने कहा कि कृष्णा मुझे बता रहे हैं कि मुझे आपको शरणागत करना चाहिए और आपका शिष्य बनना चाहिए. Right? ऐसा Yes. है नहीं? So, do you think that your mood and mentality and how you're speaking to me, this is the proper mood of a bona fide disciple? तो आपको लगता है जिस भाव से और जिस मानसिकता से आप मेरे साथ बात कर रही Why हैं क्या आपको not? लगता है ये प्रामाणिक शिष्य का ऐसा This is कार्य only है करना? answer the question. Only question. Mataji, I don't appreciate your attitude problem. तो गुरुदेव बता रहे हैं माता जी आपका ये जो रवैया है ये पसंद नहीं आ रहा. And you cannot hear or understand what I'm trying to explain. और आप न तो सुन पा रही है न समझ पा रही है मैं क्या आपको So बताने का you're प्रयास coming कर in रहा a हूँ. very aggressive and confrontational manner. तो आप झगड़े के और बहसबाजी के भाव में आ रहे हैं. So this is not proper mood of disciple. तो ये शिष्य का सही रवैया नहीं है. So now I have to rethink, you know, who are you? तो अब मुझे फिर से सोचना होगा आपके ऊपर कि आप है कौन. Is not the right mood. ये सही भाव नहीं है. If you have a sincere, honest question, then you should pray to Krishna and allow the spiritual master to speak to answer your question. अगर आपको कोई एक निश्चित ईमानदारी से कोई प्रश्न है कृष्णा के प्रति तो आप आध्यात्मिक गुरु से पूछे और कृष्णा से अपने हृदय में प्रार्थना कीजिए उस उत्तर को स्वीकार कर पाने के लिए. So you're not taking humble position. तो आप विनम्र स्थिति अपने You have ग्रहण very नहीं करें challenging, aggressive approach. और चुनौती और अकड़ के साथ सामने आ रहे हैं. I'm trying to explain it to you in a way that not only will help you but help other people because you made a big statement in front of everybody. और मैं आपको उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके और बाकी सभी लोगों की मदद हो सके क्योंकि आपने बहुत बड़ा वाक्य कह दिया सभी के So I'm सामने. trying to explain it in a way that everyone can get the right understanding. ताकि मैं इस तरीके से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि सभी लोग सही तरीके से चीज को समझ But you पाएं. evidently want me to answer your question the way that you want me to answer your question. लेकिन आप चाहती हैं मैं आपके सवाल का उत्तर वैसा दूं जैसा आप चाहती हैं. And I'm not your disciple. और मैं आपका शिष्य नहीं हूँ I don't need you. और मुझे आपकी जरूरत भी नहीं है. I'm trying to help you. मैं आपकी मदद करने का Because प्रयास you कर रहा हूँ came to me asking for help. क्योंकि आप मेरे पास आए मदद मांगते हुए. So the mood is not correct. तो आपका भाव सही नहीं है. And if you can't understand that, then you're not really disciple. और अगर आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप शिष्य ही नहीं हैं. You're not qualified yourself. आपने अपने आप को योग्य नहीं बनाया. So it says that potential disciple is testing the spiritual master. बताया जाता है जो शिष्य गुरु ग्रहण करना चाहते हैं वो गुरु की परीक्षा करते हैं. But spiritual master is also testing potential disciple. लेकिन गुरु भी अपने होने वाले शिष्य की परीक्षा लेते हैं. And it's explained that what is the test of the potential disciple is
how do you say, how obedient, how humble, how submissive is this person? और शिष्य के अंदर जो योग्यता देखते हैं गुरु, ये कितना आज्ञाकारी है, कितना विनम्र है, कितने बातों को सुनेगा। Will they sincerely surrender and try to understand what are we saying? वो एक निष्ठता से शरणागत करके समझने का प्रयास करेगा कि क्या बातें उसको बताई And जाएंगी। then if you explain everything nicely, will they actually accept it and try to execute the order or the instruction? और जब उनको अच्छे से समझाया जाएगा तो क्या वो उसको स्वीकार करेंगे और उसको पालन, उस निर्देश को पालन करने का प्रयास करेंगे? That means humble state of mind. ये है विनम्र मनोभाव। So there's also requirement for potential disciple तो ये भी भावी शिष्य के अंदर ये योग्यता होनी चाहिए। an argumentative, confrontational type of style, तो ये बहसबाजी करके करने का जो तरीका है, asking what's the word? Antagonistic. Hmm? Antagonistic. No, not an appropriate type of question in this setting. तो जैसा परिवेश है उसके आधार पे सही प्रश्न नहीं करना। When you have all of these different persons, some new people, some people who have just come, this type of challenging, aggressive type of questioning is it's not an appropriate question in this situation. तो वर्तमान में जिस तरह की परिस्थिति है, जैसे हैं लोग आए हैं, कुछ नए लोग भी आए हैं, ऐसे समय में आप ऐसे चुनौती देने वाला प्रश्न इस परिस्थिति के अनुसार सही नहीं है। So if you have this type of question or doubt because of your asat sangha, then you could request a meeting to discuss privately with some small group of devotees who are with us. तो आपको अंदर किसी तरह का ये प्रश्न आया, किसी तरह के असत संग के प्रभाव के कारण, तो आप किसी एक भक्तों के छोटे समूह के साथ मिलकर इस प्रश्न का उत्तर पाने का प्रयास कर सकते हैं। And then in a humble state of mind, you can put your doubt or your humble submissive inquiry. और अपने विनम्र मनोभाव के साथ अपना ये विनीत जिज्ञासा आप सामने रख सकते हैं। And then you may receive mercy from Guru and Krishna और हो सकता है आप गुरु और कृष्ण की कृपा to को be प्राप्त able कर to पाएं, understand it properly. ताकि आप उस चीज को सही तरीके से समझ पाएंगे। So you have the wrong attitude. तो आपका रवैया बहुत गलत है। You're asking inappropriate question based on the context of this particular class and the audience. और आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, खास करके वर्तमान में मौजूद परिस्थिति और जिस तरह के लोग मौजूद हैं क्लास में उसके आधार पर। But still, because you made this type of question, now I'm duty bound to try to explain it in a way that everybody can understand. लेकिन फिर भी आपने ये सवाल पूछा है, तो अब मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इसको इस तरीके से समझाऊं ताकि सभी लोग इसको सही तरीके से इसको उत्तर में समझ So I पाएं। didn't even avoid the question. I'm attempting to try to answer the question. तो मैं आपके प्रश्न से बचने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं इसके प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। And you're not allowing me to answer it in a way that Krishna is prompting me to answer it. और आप मुझे उत्तर देने नहीं दे रहे हैं जैसा कृष्ण मुझसे उत्तर दिलाना चाह रहे हैं। And then you're bringing additional question और फिर उसके बाद आप एक दूसरा सवाल लेकर आ रहे हैं that beyond people saying like this, that why does Krishna allow such people to remain in the material world, in the institution? So now you're asking additional question. और फिर उसके साथ आप और एक सवाल जोड़कर पूछ रहे हैं कि कैसे कृष्ण ऐसे आपराधिक लोगों को ऊंचे पद पे ऐसे बने रहने दे रहे हैं, ऐसे बहुत ही जगत के। And you're not even allowing me to answer the original accusation. और आप सबसे मूल जिस चीज के आधार पर सवाल पूछे उसको भी उत्तर देने का मुझे So I'm मौका नहीं दे not रहे। quite sure this is going to help you. तो मुझे ये पता नहीं आपकी कोई मदद हो पाएगी या नहीं। And I'm not quite sure anything that I say you'll be able to understand it. और मुझे ये भी पता नहीं जो भी मैं कहूँगा आप उसको सुन पाएंगे या समझ पाएंगे। Because you're coming with a particular mood, a challenging, aggressive mood. क्योंकि आप एक अलग भाव से, एक चुनौती देने के और अकड़ के भाव से आए हैं। You're not being humble. आप विनम्र नहीं हो रहे हैं, You're just boldly speaking. आप पूरे बस हिम्मत से बोले जा रहे हैं। Is this proper behavior for a woman in Vedic culture? क्या स्त्री का वैदिक संस्कृति के अनुसार ये सही रवैया है? What to speak of potential disciples? तो एक भावी शिष्य होने के दूर की बात है। Is this your conception of Vedic culture? क्या आपको वैदिक संस्कृति का ये अनुमान है? So on which level are you asking this question in a way which is at all authorized? तो किस स्तर से आप ये सवाल पूछ रहे हैं जिसके आधार में माना जाएगा कि आप बिल्कुल सही आधिकारिक प्रश्न पूछ रहे हैं?
Now, I may, even though you're completely disqualified, I could still answer the question. हो सकता है आप पूरी तरह से अयोग्य हो, मैं फिर भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। And I'll have to because you made such arrogant statement. और मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने ऐसा अकड़ से अपने ऐसे सवाल पूछे। On behalf of these persons that you're listening to. उन व्यक्तियों की तरफ से जिनकी बातें आपने सुनी। But I'm not quite sure when I answer this question that you'll be able to understand what I say anyway. और लेकिन मैं ये सुनिश्चित नहीं कह सकता कि जो मैं उत्तर दूंगा आप उसमें से कुछ भी समझ पाएंगे या नहीं। But since you brought an interesting point, then maybe everyone now has to hear how will I answer this type of accusation or question. क्योंकि आप बहुत दिलचस्प बात लेकर आए तो आप सभी को ये सुनने की जरूरत है कैसे इस प्रश्न का मैं उत्तर एक बहुत अच्छे तरीके से दे पाऊंगा। So Maya it explains that Maya makes what is truth to appear as untruth. तो बताया जाता है माया जो सत्य है उसको असत्य के रूप में दिखाती है। And untruth as truth. और असत्य को सत्य के रूप में दिखाती है। This is Maya Jagat. This is the world of Maya. ये है माया जगत। Right. So what is true, she says that's untrue. जो सत्य है वो कहेगी असत्य है। What's untrue, she says it's true. जो असत्य है वो कहेगी ये सत्य है। Right? What's real, she says no, that's unreal. और जो असली है वो कहेगी ये नकली है। And what's unreal, she said that is real. और जो नकली है वो कहेगी ये है असली। So we're living in such a place, such an environment where everything is exactly opposite. तो हम ऐसे जगह में ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। And it's explained in this, especially in this most dreadful, sinful age, everything is disturbed in this age. और बताया जाता है वर्तमान सबसे अधम पापमय युग में सब कुछ पूरी तरह से परेशान है। And the persons in this age, because of so much sinful activity, we have no real qualifications spiritually. और विशेष करके ऐसे कलियुग के लोगों का असल कोई योग्यता नहीं है। Under modes of material nature, प्रकृति के गुणों के अधीन है। tamagun, rajagun. तमोगुण और रजोगुण। So our intelligence, mind, and senses is polluted, contaminated, controlled by Maya. मन, बुद्धि, इंद्रिय माया के द्वारा दूषित है उसके नियंत्रण में है। Means that it says that persons in Kali Yuga, they'll misunderstand practically everything. बताया जाता है कलियुग के मनुष्य व्यवहारिक रूप से सब कुछ गलत समझते हैं। They're always disturbed on mental, sentimental platform. मानसिक भावुक स्तर में हमेशा परेशान रहते हैं। And they have no real qualification to understand it or to solve it on their own. और उनके पास कोई असल योग्यता नहीं है इसको समझ पाना और इसको समाधान भी कर पाना खुद से। So this is the nature of the place, the environment that we find ourselves in. तो ये इस जगत और इस परिवेश का सच्चाई है जो जिसे And Vaishnava explained that we have no karma, no good karma, no jnana, no yoga, no bhakti. We have nothing. वैष्णव बताते हैं ना हमारे पास अच्छा कर्म है, ना ज्ञान है, ना योग, ना भक्ति। And most of the people in this world, they're not serious about spiritual life. और ज़्यादातर लोग इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जीवन के लिए गंभीर नहीं हैं। Prabhupada says in his books and teachings, even the people who come to Krishna consciousness, प्रभुपाद अपनी किताबों और शिक्षा में कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत में भी आ रहे हैं, hardly anybody is serious to go back home, back to God. मुश्किल से भी कोई गंभीर है भगवत धाम वापस जाने के लिए। Even within religious institutions. यहाँ तक कि धार्मिक संस्था के अंदर भी। And because we're not serious, we're cheating, there needs to also be cheating gurus. और क्योंकि हम गंभीर नहीं हैं, हम ठग रहे हैं, तो इसलिए ठग गुरुओं की भी जरूरत है। Therefore, you have so many self-made gurus. इसलिए बहुत सारे स्वयं निर्मित गुरु हैं। Or you have people that are, rubber stamping gurus. या फिर ऐसे गुरु हैं जो रबर का ठप्पा लगा के गुरु बने हैं। And so this is not the process according to Prabhupada's and previous acharyas' books and teaching. और लेकिन ये प्रक्रिया नहीं है प्रभुपाद और पूर्व आचार्य किताबों और उनकी शिक्षाओं के आधार पर। And when you try to establish what is the actual truth, what is the actual process, most people, they don't want to consider that. They don't want to understand that. और जब आप असल प्रक्रिया, असल चीज को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को इसको सुनने में कोई रुचि नहीं है। Because they're cheating, they need to be cheated. वो ठग रहे हैं और जब उनको ठगने की जरूरत है। So there needs to be cheating gurus. इसलिए ठग गुरुओं की जरूरत है। So I was asking, didn't you have other gurus before? तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि आपके पास पहले दूसरे गुरु नहीं थे? Why you're not with them? Why you're not surrendering and being disciple to the other gurus? तो आप उनके साथ क्यों नहीं? उन गुरुओं को शरणागत, उनका शिष्य बनने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? Why instead is Krishna sending you here? और इसके बजाय कृष्ण आपको यहाँ क्यों भेज रहे हैं?
So you're so sincere and serious to want to surrender to Krishna, and then Krishna is going to send you to a criminal? तो आप बहुत गंभीर एक कृष्ण को शरणागत सेवा करने के लिए और कृष्णा आपके जीवन में एक अपराधी को भेजेंगे। Does that make any sense? क्या इसका कोई भी मतलब बनता है? So then, what is the presentation? Is the presentation according to Guru Sadhana Shastra? तो प्रस्तुति किस चीज के आधार पे? गुरु साधु शास्त्र के आधार पे है। And what is the effect of hearing those instructions that are based on the science of Guru Sadhana Shastra? What is the effect that you get by proper hearing? तो उस सही श्रवण से, उस गुरु साधु शास्त्र की प्रस्तुति से आपके अंदर कैसा प्रभाव दिख रहा है अगर आपने सही श्रवण किया हो? So all of the knowledge realization should be presented within that scientific approach. और ये सारा ज्ञान साक्षात्कार प्रस्तुत किया जाना चाहिए इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से। And any reasonable doubt can also be destroyed. और कोई भी आपके अंदर जो संदेह है उसको भी नष्ट किया जाना चाहिए। Because only Krishna can destroy the doubts. क्योंकि केवल कृष्ण ही संदेहों को नष्ट कर सकते हैं। So Krishna's Madhu, what is it? Madhusudana, right? Is the killer of Madhu demon, right? कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं, मधु नाम के असुर का उन्होंने वध किया था। So when I was thinking tonight, what would I speak about? This point was coming up about doubts. तो जब आज रात में सोच रहा था किस चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो मेरे मन में ये संदेह के बारे में Now I understand why. अब मुझे समझ में आया। When you hear statements like this, obviously it will create some doubt. इस तरह के जब हम वाक्य सुनेंगे तो निश्चित ही किस तरह के संदेह उत्पन्न होंगे। And that's natural in one sense. और ये बहुत स्वाभाविक भी है। So it's very natural to realize, oh, I have a doubt, I want to try to overcome the doubt. ये बहुत स्वाभाविक बात है ये जानना कि हाँ मेरे अंदर कोई संदेह है और मैं संदेहों से बाहर निकलना चाहता हूँ। But there's also a way of how we need to present ourselves and to the right personalities who we have faith in that they can help us to overcome those doubts. लेकिन एक सही तरीका भी है कैसे हम अपने संदेहों को इस तरीके से रख सकते हैं और पूरी इतनी श्रद्धा रख सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे संदेहों को नष्ट कर पाएगा, प्रश्न को उत्तर दे पाएगा। So Krishna says these doubts, these are like demons. कृष्ण बताते हैं ये संदेह असुर के जैसे। So because of asatsanga and by listening to asatsanga, you've created the demons of doubt. तो असत्संग और असत्संग को सुनने की वजह से आपके अंदर संदेहों के असुर पैदा हो चुके हैं। So I was originally just trying to help you with the demons of doubt. शुरुआत में मैं केवल आपको मदद करने का प्रयास कर रहा था आपके संदेहों के असुरों से आपको बचाने के लिए। But then I understood you're not in the right mood and not asking the question in a proper way. तब मैं समझ पाया आप सही भाव में नहीं और ये प्रश्न सही रवैये से पूछ नहीं रहे हैं। So although I was prepared to help you with your demons of doubt, और यदि भी मैं तैयार था आपके संदेहों के असुर से आपको बचाने के लिए, then I was realizing that, oh, you're not in the right consciousness and the right mood. तब मुझे साक्षात्कार हुआ कि आप सही चेतना में और सही भाव में नहीं हैं। And you have very challenging type of mood. और आप बहुत चुनौती देने के भाव से आए हैं। So then I realized, oh, whatever I say, you're not going to be able to hear it anyway because your mood and mentality is not correct. तब मुझे यह साक्षात्कार हुआ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा आप कुछ भी सुन नहीं पाएंगे क्योंकि आपका भाव और आपकी मानसिकता बिल्कुल भी सही नहीं है। So then I said, okay, maybe I can help you with your mood and mentality to make you in a better understanding so you'll be able to hear what I say so we can try to destroy the doubt. तब मैंने ये सोचा कि मुझे आपके भाव और मानसिकता को कुछ इस तरीके से मदद करना होगा ताकि आप सही चेतना में आ सके और मेरे प्रश्न को उत्तर सुन सके और आपके संदेह धीरे-धीरे नष्ट हो सके। But even that you're not nicely taking. लेकिन उसको भी आप अच्छे तरीके से नहीं ले पा रहे। So now I have to just make it in a broader sense for those who can hear what I'm saying. तो अब मुझे इसको विस्तृत तरीके से करना पड़ा उन बाकी लोगों के लिए जो हो सकता है उसको समझ पा रहे हैं। That of course there'll be questions and doubts which Maya attacks us. निश्चित ही कुछ प्रश्न या संदेह होंगे जो माया हमारे पर हमला करने का प्रयास करेगी। Especially if we want to try sincerely to get out of Maya. और विशेष करके जब आप एकनिष्ठता से माया से बाहर निकलने का प्रयास It's करें। explained when you really seriously try to get out of Maya, Maya will attack you. जब गंभीरता से एकनिष्ठता से माया से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे माया आपको पर हमला Like करेगी। ferocious attack. बहुत ही खूंखार हमला करेगी। So if you're mixing with a satsanga and you're hearing faithless people and their statements, you're taking all of that inside of you. अगर आप असत्संग से मिल रहे हैं और ऐसे श्रद्धाहीन व्यक्तियों की बातें सुन रहे हैं और ये सब अपने अंदर आप भरने का प्रयास कर रहे हैं। This is a nice example of how when we are not careful about who we associate with, how when you hear from certain persons, whatever doubts that they have, that will actually enter inside of you. तो ये है प्रभाव जब हम सावधानी से उन लोगों का संग नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को हम सुन लेते हैं और उनके संदेह हमारे भीतर घुस जाते हैं।
So association means to clear the doubts, संग का मतलब होता है कि ऐसे सारे संदेह नष्ट हो, not to increase the doubts. संदेह को बढ़ाना नहीं. Sometimes I make a little joke that devotee has 3 doubts and he's associating with the other devotee who has 3 doubts and they both leave their association and they each have 6 doubts. मजाक करता हूँ मैं, एक भक्त के पास 3 संदेह है और दूसरे भक्त के पास जाता है, उसके पास भी 3 संदेह है, फिर दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों जब अलग होते हैं दोनों के पास 6 संदेह है. Because he couldn't kill your 3 doubts. कि उसने आपके 3 संदेह खत्म नहीं किए. And you couldn't kill his 3 doubts. ना तो आपने उनके 3 संदेह खत्म And किए. now he just taught you 3 more doubts. उन्होंने आपको 3 संदेह और दे दिए. And you reminded him of your 3 doubts. और आपने उनको अपने 3 संदेह का याद दिलाया. And he reminded you of his doubts. और उन्होंने आपको अपने संदेहों का So now स्मरण you walk कराया. away with 6 demons of doubt. अब आप 6 संदेहों के असुर के साथ घूम रहे हैं. So what benefit comes from that? तो इसका आपको लाभ क्या मिला? So it's understood, the spiritual master understands, if you try to get out of Maya, this person is going to be attacked. Maya is going to attack them, touch them. तो आध्यात्मिक गुरु को पता है ये व्यक्ति जब माया से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है तो माया इसको प्रहार करेगी, हमला करेगी. And ferocious attack means so many doubts will come to you. और बहुत ही खूंखार हमला करेगी, इसका मतलब बहुत सारे संदेह आपके अंदर आएंगे. I've been doing this for 35 years. तो ये मैं 35 सालों से कर रहा हूँ. You think this is the first time I've heard this type of situation? आपको क्या लगता है मैं पहली बार जिंदगी में इस तरह के प्रश्न या परिस्थिति से जूझ रहा हूँ? There's nothing anyone can say that can shock me. मुझे कोई भी ऐसा कुछ बात नहीं कह सकता जो मुझे झटका दे देगा. So it's a nice shocking type of question, but really I've heard these things and this type of approach for a long time. तो अवश्य चौंकाने वाला प्रश्न था, लेकिन इस तरह की बातें मैं कई समय से सुनता आ रहा हूँ. So I'm just directly trying to answer your doubt. तो मैं सीधे आपके संदेह को उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ To try to help you, ताकि आपकी मदद कर सकूं. but you don't have the right mood and mentality. लेकिन आपके भाव और मानसिकता सही नहीं है. Now other people may try to understand how I'm answering this doubt. हो सकता है बाकी लोग ये समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि कैसे मैं उनके संदेहों को उत्तर देने And का if they प्रयास have the करूं. right mood and mentality, they may be able to understand it properly. अगर वो सही भाव मानसिकता में है तो वो हो सकता है सही तरीके से समझ पाएंगे. But I'll just feel bad if, since you asked the question, that you're not able to overcome your doubts. क्योंकि मुझे ये बुरा लगेगा क्योंकि आपने सवाल पूछा लेकिन आप इस संदेह से बाहर नहीं निकल If I make such a sincere, honest endeavor to try to destroy the doubt, अगर मैं अपना पूरा ईमानदारी से एकनिष्ठ प्रयास करूं आपके संदेहों को खत्म करने का, then I feel bad that you cannot clear out this doubt. और मुझे बुरा लगेगा इस बात का कि आप उस संदेह से मुक्त नहीं हो पाएंगे. Now, if we want to be cheated, we'll maintain our doubts. लेकिन अगर हम ठगना चाहते हैं तो हम अपने संदेहों को बनाए रखेंगे. Because then we have good excuse not to accept it. क्योंकि तब हमारे पास एक अच्छा बहाना रहेगा इनको स्वीकार नहीं करने Because I have some doubts. का. मेरे पास कुछ संदेह हैं Right? So I have to be careful. तो मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए. Right? So then you can just slow everything down and hesitate everything. तब सब कुछ धीमा चलेगा और आप हिचकते हुए आगे बढ़ेंगे. Because now the demons of doubt have come because of asatsanga. क्योंकि असत्संग के कारण आपके अंदर संदेहों के असुर घुस चुके हैं. And by the mercy of Guru Krishna, everything can be answered. और गुरु कृष्ण की कृपा से सारे प्रश्नों का उत्तर हो सकता है. But if you want to hang on to the doubts, लेकिन आप उस संदेह को पकड़ के बैठे रहना चाहते हैं then even Krishna himself cannot convince you. तो कृष्ण खुद आके भी आपको आश्वस्त नहीं कर पाएंगे. Make sense? आप समझ पाए? So doubts are like demons. तो संदेह असुरों के जैसे हैं. And those who are in demoniac consciousness, who have all of these doubts, they'll just spread their doubts. और जो आसुरिक चेतना वाले हैं इस सारे संदेहों में हैं, वो अपने संदेहों को आगे फैलाते हैं. And naturally, if you just open your ear and your heart and hear this thing, definitely you'll be contaminated by that, you'll be overwhelmed by that. और आप अपना हृदय, अपना मन इनको सुनने के लिए खोल देंगे तो निश्चित ही आप इससे दूषित हो जाएंगे. That's why every day you cannot hear properly. इसलिए हर दिन आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं. Because on your own, you're just going and doing this type of association and hearing all of this type of criticism. क्योंकि आप खुद से जाके ऐसा संग कर रहे हैं और इस तरह के दोषों को सुन रहे हैं. You want to defend yourself? अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहती हैं. I am not listen nobody. She says, I am not listen nobody. She says, I'm not listening to anybody. Asatsanga. So where did you get the Last- get the question from? तो माला जी कह रही हैं One question 2 days ago. One speak. Only one speak. David, Yeah. She says that she has only one talk
We suffered it like 2 days ago. Right, so for the last couple of days, since she talked to these people, right, she could not hear anything. तो माता जी कह रहे हैं कि 2 दिनों पहले मैंने बस एक बार किसी से बात की, तो गुरुदेव बता रहे हैं इन 2 दिनों के दौरान मैं अभी किसी भी दिन कुछ सुन नहीं पा रही। And even the one thing that you hear is that your guru is a criminal. You know, I mean, how many more things you need to hear after that? You know what I mean? एक ही बार जब आपने ये सुन लिया कि आपके गुरु एक अपराधी है, One thing. मैंने बस एक ही चीज सुना और इससे बुरा और क्या सुन सकते हैं आप इसके बाद? There's only one thing. बस एक ही चीज सुना। He's a murderer and a criminal. ये एक हत्यारे हैं और Hiding out as a devotee in the holy dham. That was it. That's the only thing I heard. और बस मैंने इतना ही सुना था। Besides that, no, everything's cool. और इसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है और कुछ नहीं सुना। Gurudev, why you are angry? Why you are angry? Why am I angry? Yes. माता जी पूछ रही हैं गुरुदेव आप गुस्से में क्यों हैं? Simple question. I don't think it's anger. I think it's disappointment. तो गुरुदेव बता रहे मुझे नहीं लगता ये गुस्सा है, ये एक तरह की निराशा है मेरे लिए। Because you came in such a humble way, and you were listening nicely, and you were able to surrender, and you were happy, and we invited and bought the plane tickets for you to come to India to help you. So I'm just a little disappointed, not so much with the question, but with your attitude. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि आप शुरुआत में आई, आप बहुत सरल तरीके से विनम्र भाव से शरणागत करने के लिए आई। Simple question because You don't have right attitude, Mataji. माता जी आपका रवैया सही नहीं है। this is only Okay. simple Give question. somebody the microphone. माइक्रोफोन Give किसी और को somebody the दीजिए आप। microphone. किसी और को दीजिए। You're disqualified from asking questions. आप प्रश्न पूछने का अधिकार खो चुके हैं। Hare Krishna. Hari Krishna. You don't have right mood, mentality. आपका सही भाव मानसिकता नहीं है। You're not here to hear anything. आप Why stay here? आप Why don't यहाँ you go run to your friends and let them be your guru? आप यहाँ बैठ के क्यों सुन रहे हैं? आप कुछ सुन नहीं सकते। आप जाइए अपने दोस्तों के पास और उनको अपना गुरु बनाइए। You don't have to stay here. आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। I didn't force you to come here. मैंने आपको यहाँ मजबूर नहीं If किया। you're not satisfied, अगर आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, then you don't have to stay here. आपको You don't यहाँ have to रहने come here. की जरूरत नहीं है हमारे If you साथ। think someone else can answer all of your questions and destroy all of your doubt, then go. अगर आपको लगता है कोई और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, आपके सारे संदेहों को नष्ट कर सकता है, तो आप जाइए। Do you think your attitude is appropriate? क्या आपको लगता है आपका रवैया सही है? Do you think this will help you? आपको लगता है कि ये आपकी मदद कर पाएगा? Yeah, better she's quiet. बेहतर होगा कि आप चुपचाप रहें। She's already said so much. आपने पहले ही बहुत कुछ बोल दिया। So now the criminal murderer is angry. अब ये अपराधी और हत्यारा गुस्सा हो चुका है। What else can we add on to that? इसमें हम और क्या जोड़े हम? Criminal murderers are supposed to be angry, aren't they? अपराधी और हत्यारे गुस्से में ही रहते हैं। So that's a confirmation. आपके लिए पुष्टिकरण हो चुका है। So I'm trying to help you, but you can't understand how I'm trying to help you. मैं आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं कैसे आपकी मदद करने का प्रयास करूँ, क्योंकि आप कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। And it's unfortunate. और ये बहुत बड़ा I'm दुर्भाग्य actually है। more disappointed और असल में मैं बहुत निराश हूँ for you आपके than any other move. और किसी भी अन्य भाव आपके भाव की वजह से। If someone has sincere question or doubt, that's not so much of a problem. अगर किसी का कोई एकनिष्ठ सवाल है, संदेह है, तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। Because if you depend on Guru Krishna, everything can be answered properly क्योंकि अगर गुरु कृष्ण के ऊपर निर्भर रहा जाए तो सारी चीजों का सही उत्तर किया जा and सकता in a convincing way. है और सभी आश्वस्त हो सकते हैं। But you're not apparently giving me opportunity. लेकिन आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं, बाहर से देखने में लग रहा है। And now everybody is infected by your one statement that you heard in your asatsanga. और सभी लोग आपके उस एक वाक्य से प्रभावित हो चुके हैं, एक आपके असत्संग से। So now everyone has to be disturbed by your disturbance. अब सभी को आपकी परेशानी से परेशान होना होगा। And you think you're so right. और आप सोच रहे हैं आप इतने सही हैं। So if you can't hear anything, then you don't have to stay here. अगर आप कुछ सुन नहीं पा रही हैं, तो आपको यहाँ रहने की You जरूरत go नहीं है। back to Poland, no आप problem. पोलैंड वापस जा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है।
Or you can accept someone else as your guru, या फिर आप किसी और को अपना गुरु बना सकते हैं, someone who's not an angry, murdering criminal. कोई जो गुस्से में नहीं रहता, हत्यारा नहीं है और अपराधी नहीं है। I'm so surprised in all your sincerity and seriousness to surrender to Krishna that he would make an arrangement for you to go and try to take shelter of such a personality. तो मैं बहुत असल में आश्चर्य हूँ कि आप इतने गंभीर और एकनिष्ठ हो रहे थे और आप जाके ऐसे व्यक्ति का आश्रय और उनकी बातें सुन रहे हैं। It doesn't add up. तो ये कुछ मेल नहीं खा रहा। Right? If you know you're sincere and you're serious and you're trying to surrender to Krishna, अगर आप जानते हैं, अगर आप एकनिष्ठ हैं, गंभीर हैं, कृष्ण को शरणागत करने का प्रयास कर रहे हैं, and you know that you've gone and heard from so many different gurus, और आपको पता है कि आप गए हैं बहुत सारे अलग अलग गुरुओं के पास जाके आपने सुना and है, even you became Ritvik personality, और यहाँ तक कि आप एक ऋत्विक व्यक्ति भी बन to चुके just make a Prabhupada your guru, हैं, किसी तरह से मैं केवल प्रभुपाद को अपना गुरु बनाऊं, right? But still you're praying to Krishna, you're trying to understand, तब भी आप कृष्ण को प्रार्थना करने का, समझने का प्रयास कर रहे थे, right? And then somehow or other Krishna makes arrangement, Prabhupada makes arrangement for you to come. और किसी तरह से कृष्ण प्रभुपाद ने आपके लिए व्यवस्था बनाई है आने के लिए, And most of the devotees here have same experience. और ज्यादातर हम में से यहाँ मौजूद भक्त का एक ही जैसा अनुभव है। So when I was praying to Srila Prabhupada and I was also not satisfied by other gurus, और मैं भी then जब Krishna sent Srila Govinda Swami. श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना कर रहा था, मैं भी जब बाकी गुरुओं से सुनकर संतुष्ट नहीं था, तो श्रील प्रभुपाद ने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को मेरे लिए भेजा। So if you're not disciple and I'm not the guru, then we can be friendly. I don't have to try to correct you. I don't have to try to warn you. Right? तो अगर आप शिष्य नहीं हैं और मैं गुरु नहीं हूँ, तो हम बस दोस्ताना रवैया रख सकते हैं। मैं आपको सुधार नहीं करूँगा, आपकी गलती नहीं निकालूंगा। I don't have to try to chastise you. आपको डांटने की जरूरत नहीं है मुझे। Right? I don't have to try to cut your false ego. आपके मिथ्या अहंकार को मुझे काटने की कोई जरूरत नहीं। Right? Because that's all the duty, responsibility of guru. क्योंकि गुरु का यही एकमात्र कर्तव्य है। So I was assuming that that's what I was trying to do based on what you asked me to do. मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये कर्तव्य है, जिस तरीके से आप मेरे पास आए थे। But now that it's clear that that's not really your mood or intention, then I also have no responsibility for you. अब जब ये साफ हो चुका है कि आपका वैसा भाव या आपका वैसी मानसिकता नहीं है, तो मैं भी अब समझ चुका हूँ मेरी क्या जिम्मेदारी है। So I also don't have any real right to try to chastise you or correct you or to warn you. तो मेरा भी अब कोई असल अधिकार नहीं है आपको सही करना, आपको डांटना, because even that you're taking it in a materialistic way. क्योंकि उसे भी आप एक भौतिक तरीके से समझ रहे हैं। So right now you have no faith. तो वर्तमान में आपके पास कोई श्रद्धा नहीं है। So it says in the Shastra you should not preach to faithless people. तो शास्त्र में बताया गया आपको श्रद्धाहीन व्यक्तियों का प्रचार नहीं करना चाहिए। So this is unfortunate. This is a result of asatsanga. ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य या सत्संग का परिणाम है। In living color. ये अलग-अलग रंगों में। Right example. This is like a bright example. ये बहुत ज्वलंत उदाहरण। Even one thing you hear, एक चीज बस उन्हें सुनिए, you can spoil everything. आप सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। That's why it says once you have just like a little plant, right? Once you put the plant, right, you have to put a fence around it. इसलिए बताया जाता है जब आप छोटा पौधा लगाते हैं तो उसके आसपास घेरा लगाना होता है। So to protect the Komala Shraddha, ताकि उस कोमल श्रद्धा को रक्षा किया जा सके। right? So if you put a fence around, let it stronger, let the faith become stronger, जब उसके चारों ओर घेरा लगा के उस श्रद्धा को और ज्यादा मजबूत शक्तिशाली होने दिया जाए, then it will not get broken तब ये टूटेगा नहीं by some cows or some animals. किसी गाय या किसी जानवर से। But if you don't protect it, लेकिन अगर आप उसको बचाया नहीं जाएगा, then very easily everything can be broken, destroyed. तो बहुत ही आसानी से सब कुछ टूट सकता है, तबाह हो सकता है। And that was the risk, that's the risk और यही खतरा है of dealing in society, इस समाज में, especially complicated society. विशेष करके जटिल समाज में। Any other questions? कोई अन्य प्रश्न? Yeah? Yeah, go ahead. आप बताइए।
সুরেন্দ্রবাবু, প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমার গ্রামে সমস্ত ডেভোটিস গিয়েছিল বৈষ্ণব সেবার জন্য। তো তারপরে ওখান থেকে আসার পর কিছুদিন পর জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের 3টে ভক্তের সাথে আমার মিট হয়েছিল। 3টে ভক্তের সাথে আমার মিট হয়েছিল কিছুদিন পরে। তো ওরা আমাকে এসে বললো যে তোমার ব্যাপারে শুনলাম তোমার বাড়িতে নাকি অনেক ভক্ত এসেছিল মায়াপুর থেকে, তো তুমি কোথায় থাকো এবং তোমার গুরু মহারাজের নাম কি এবং তুমি কোথায় আশ্রয় নিয়েছো। তখন আমার মনে একটা গভীর প্রশ্ন আসলো, উনি তো তাই তো আমি তো কোথাও আশ্রয় তো নেই, আমি যে তুলসী কাঠে মালা পড়েছি, জপ করছি, কোনো নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আমি ছিলাম না তখন। তো তারপরে বলে তুমি কি প্রাপ্তি করেছো। আমরা এখন জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের আমি 9 বছর ধরে আছি, আমি এখন আমেরিকাতে থাকি। আমি এখানে এসে প্রচুর সম্পত্তি এবং ফরচুনার গাড়ি কিনেছি, 42 লাখ টাকা দাম ভারতীয় রুপি। তো আমার এটাই প্রশ্ন, তো আমার এটাই যে আমার গ্রামের আমাকে কিছু ব্যক্তি তারপর বলছিল যে যারা ইস্কনের ভক্ত হচ্ছে দেখছি পাহাড় পাহাড় টাকা এবং অনেক সয় সম্পত্তি কিনছে এখানে, একদম বাস্তব, এটা আমিও দেখেছি। তো আচ্ছা সরি। Wow, you're fired up, man. তো I think he's angry. তো আমার খুব খারাপ লাগে যখন কেউ বলে যে তার মানে ওরা কি গ্রামের লোক এটাই ভাবে যে মায়াপুরের ভক্ত টিকি রাখছে, ডেরা করছে, জব করছে, তার মানে সবাই পয়সা কামানোর জন্য ইস্কনে যোগদান দিচ্ছে। তো এটা থেকে আমি খুব ব্যথিত এবং খুবই দুঃখিত। এখান থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তার জন্য আমি হেল্প চাইছি। So, Wow. so he's saying that our devotees went to his house for a program there. We did a program in his house, and after the program, 3 disciples of Maharaj, Jayapataka Swami Maharaj, came to his place and they talked to him and they asked him that recently few devotees came from Mayapur to your house for some program, and they were asking that, they were saying, one of the disciples, they said that I heard that you are like doing Siksha. yeah, taking Siksha from ISKCON and like following ISKCON. So who are you associating with? Who is your guru? Who are you following? Like this. Who's your mama? Aapki maut kaun hai? And then he was saying, so what have you gained so far by doing your, like whatever time you spent in ISKCON? What have you gained? One of them, he said, now after taking initiation, I went to America, I got a lot of money, and I got a lot of property, and I have 42 lakh worth of big vehicle. Another one also said, I also got initiation, I also got a lot of money and a lot of like material facility. So then they asked him, what did you got after coming to ISKCON? I lost everything. So Gurudev bata rahe, so Prabhu ne bataya ki and then he said that in his village, this is now this people are like talking like this about ISKCON and about him also. That means like everybody goes to ISKCON so that they can get like a mountain of money, and that's why everybody is going and joining ISKCON and going to Mayapur. So it's like kind of bad impression also in the society. And then he's saying, how do I also like get rid of this kind of like criticism, and like how do I practice myself properly and avoid this kind of like talkings among the... You already realize what is your other option for association. तो प्रभु ने सवाल पूछा कि मेरे घर पे कुछ प्रोग्राम हुआ, यहाँ मायापुर से भक्त आए थे और कार्यक्रम होने के बाद में 3 शिष्य आए जयपताका स्वामी महाराज के। उन्होंने, एक ने कहा कि हमने ISKCON में आने के बाद बहुत सारी संपत्ति प्राप्त की, गाड़ियाँ प्राप्त की, आपने क्या प्राप्त किया? बाकी सभी ने यही कहा। तो मुझे ये बहुत बुरा लगी, प्रभु बता रहे, मुझे ये बात बहुत बुरा लगी कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ISKCON में जाने के बाद हम काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, विदेशों में जा सकते हैं, संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी भक्ति जो है मुझे बाधा डाल रही थी, लोग इस तरह से बातचीत करते हैं, विचार करते हैं, तो मैं कैसे इससे बाहर निकल सकता हूँ? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि आप पहले ही आपको पता चल चुका है आपको कैसा संग करना है और कैसा संग नहीं करना है।
It's like Lord Shiva. Most people in India, they worship Lord Shiva, right? जैसे शिव जी, भारत में ज़्यादातर लोग जो है शिव जी की पूजा करते हैं Because he gives a lot of money, क्योंकि वो बहुत पैसा देते हैं, right? He gives some type of material sense gratification. वो किसी तरह की भौतिक इंद्रिय तृप्ति देते हैं. And his Ashutosh is easily satisfied and pleased also. So he gives you the most for the least effort. तो वो आसुतोष से बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा पा सकते हैं सबसे कम प्रयास से. So that sounds like best deal amongst the demigods, right? तो देवताओं के बीच में वो सबसे सही डील लगती है. You can do the less, but you can get the most materially. तो सबसे कम करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा भौतिक तरीके से. If you worship Lord Shiva, अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे, then Lord Shiva will give you vanchana. और शिव जी आपको वांछना भी दे सकते हैं. He'll cheat you. वो आपको ठगेंगे. Lord Shiva is also topmost Vaishnava. तो शिव जी है सर्वोत्तम वैष्णव. So he can also give you Krishna. और वो आपको कृष्णा भी दे सकते हैं. So are we going to Lord Shiva for Krishna or we're going for some materialistic purpose? तो हम शिव जी के पास कृष्णा को पाने जा रहे हैं या फिर किसी भौतिक उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं. There was one person in Orissa. He was used to be like Ghostbuster, you know. उड़ीसा में एक व्यक्ति था, वो भूत पकड़ता था. He used to run one place called Pagala Ashram, वो एक आश्रम चलाते थे, उसका नाम था पगला आश्रम. and he used to take out the ghosts of everybody and put them in little jars on the altar in his Pagala Ashram. तो वो सभी लोगों से भूत निकाल के छोटे-छोटे बोतलों में भरते थे और अपने ऑल्टर में रखते थे अपने पगला आश्रम. We were going through there one time on the Padayatra. He came out with his purple clothes on and he was like dancing around like a wizard, you know. तो एक बार हम जब पद यात्रा कर रहे थे, वो अपने आश्रम से बाहर निकले, वो बैंगनी रंग के कपड़े पहने थे और एक जादूगर की तरह जो है घूम-घूम नाच रहे थे. And even he'll go to America and charge all the gurus like big money to take the ghosts out of them. और यहाँ तक कि वो अमेरिका जाके बड़े-बड़े गुरुओं से बहुत पैसे लेते थे उनके अंदर का भूत निकालने के लिए. Like so all big GBC gurus, they're going there and they're saying, he's saying, yes, you have like 9 ghosts, you know. You just give some money, we'll take the ghost out of you. तो किसी जीबीसी गुरु के पास जाते थे, वो कहते थे कि आपके भीतर 9 भूत हैं, आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं आपका भूत निकालूंगा. For real. बिल्कुल असली घटना I'm है. not making up this story. मैं कुछ कहानी नहीं बना रहा. So this person, because he's from Orissa, he came to Srila Govinda Swami. और क्योंकि ये व्यक्ति उड़ीसा से था, तो ये श्री द्वार गोविंद महाराज के पास आया. And he said, you're a sadhu guru, I want to become your disciple. उन्होंने कहा आप साधु गुरु हैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ. And Srila Govinda Maharaj told him, okay, but you have to give up all of this तो nonsense. श्री गोविंद महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन ये फालतू काम छोड़ना होगा. Just complete the scam, you know. ये सब पूरा घोटाला हो रहा है. And just go after bhakti. और केवल भक्ति के पीछे जाओ. Don't worry about all of this other magic and black magic and all of this other thing. तो ये सब काला जादू के पीछे मत जाइए. And he said, no, I cannot give all of this up. उन्होंने कहा नहीं, मैं ये सब नहीं छोड़ सकता. And the Maharaj said, I'm sorry, I cannot accept you as my disciple. तो महाराज ने कहा मुझे क्षमा कीजिए, फिर मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता. Because only I want to try to give you bhakti, क्योंकि मैं आपको केवल भक्ति देना चाहता हूँ. but you're running after all of these other things. लेकिन आप इन बाकी चीजों के पीछे भाग रहे हैं. So he was a little disappointed, but he also didn't want to give up all of his tantric and all of his, ghost-busting business. तो वो थोड़ा निराश हो गए, लेकिन फिर भी अपना ये तांत्रिक और ये भूत पकड़ने वाले काम को छोड़ना नहीं चाहते थे. Then he came to one guru, big guru in ISKCON, और फिर वो इस्कॉन के एक बड़े गुरु के पास गया and said, Maharaj ji, I want to be disciple. कि महाराज जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ. And Maharaj said, very good. महाराज ने कहा बहुत अच्छा. And immediately gave him initiation. और तुरंत ही उनको दीक्षा दिया. And he continued with his ghost-busting business. और भूत पकड़ने का अपना धंधा चालू. Even he was helping that Maharaj get rid of some ghosts, you know. यहाँ तक कि उस महाराज का भी, खुद के गुरु का भी भूत निकालने में मदद कर रहे थे. He just didn't, he gave him discount on the charge, you know. और उनको उन्होंने डिस्काउंट भी दिया. It wasn't like 100% price, you know. 100% पैसा नहीं लिया. He gave him like 20% discount. 20% डिस्काउंट दिया. Because he's my guru, you know. क्योंकि वो मेरे गुरु हैं. I can't too much cheat my guru, you know. गुरु को ज़्यादा नहीं ठगना चाहिए. So this is all going on. तो ये सब चल रहा है. So it says, you get what you deserve. तो कहा जाता है आपको वो मिलता है जिसके आप लायक हैं. So therefore, every variety is there, even in religious तो institutions. धार्मिक संस्था के भीतर भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं. Because not everybody is desiring the same thing. क्योंकि सभी लोग एक ही इच्छा नहीं कर रहे हैं.
So I tried to surrender to Krishna and to Srila Prabhupada, and as a result of that desire, I got bona fide Guru Parampara. तो मैंने कृष्णा और श्रील प्रभुपाद को शरणागत करने का प्रयास किया और इसका परिणाम मिला, मुझे प्रमाणिक गुरु परंपरा में प्राप्त हुए And he accepted me, और उन्होंने मुझे स्वीकार किया, initiated me, मुझे दीक्षा दी and trained me in Bhubaneswar और भुवनेश्वर में मुझे प्रशिक्षण दिया for some years. कुछ सालों तक। That was my background. ये है मेरा I had other gurus before, और मेरे पहले और गुरु थे, but I was not so satisfied. लेकिन मैं उतना संतुष्ट नहीं था। And so I kept praying to Krishna, please help me, please give me shelter, protection, और मैं कृष्णा से प्रार्थना करता रहा, मेरी मदद कीजिए, मुझे आश्रय रक्षण दीजिए, and also to Prabhupada. और प्रभुपाद से भी। And they sent Srila Govinda Swami to come there, और उन्होंने श्रील गौरवंश महाराज को वहाँ भेजा and he mercifully accepted me. और उन्होंने कृपा करके मुझे स्वीकार किया। So that's what happened to me. ये मेरे साथ हुआ। So I think Krishna and the Guru Parampara, they know me better than anybody else. मुझे लगता है कृष्णा गुरु परंपरा वो मुझे बाकी सभी लोगों से बेहतर जानते हैं। We talked about that the other day. और इसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की। They know your heart, they know your motivation, they know your consciousness, they know your desire, they know all of that thing. तो वो आपका हृदय जानते हैं, आपकी चेतना, आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा, सब कुछ जानते हैं। So they are the fit person to instruct us तो वो सबसे सही व्यक्ति है हमें निर्देश देने के लिए as to what Krishna wants us to do. कि कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं। And I told you all the instructions that I received from my spiritual और master. मैंने आपको बताया कि मैंने क्या निर्देश अपने आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त किए। So I don't think that he would give me those instructions if he did not have intention that I could try to help the devotees. और मुझे पता है कि वो मुझे ऐसा निर्देश नहीं देते अगर मेरी असल इच्छा भक्तों की मदद करने की नहीं होती। I know he's not that irresponsible. मुझे पता है वो इतने गैर जिम्मेदार नहीं है। One of my god brothers, he wanted to be the guru. He wants to be guru. मेरे गुरु भाई गुरु बनना चाहते हैं। So anyway, he became guru. Then when I saw him, he came up to me and he said, "I'm not really a guru." तो किसी तरह से वो गुरु बन गया। जब मेरे सामने आए उन्होंने कहा मैं असली गुरु नहीं हूँ। Even ISKCON made me guru, but I'm not really a guru. अब ISKCON ने मुझे गुरु बना दिया है, लेकिन मैं गुरु नहीं हूँ। That's just like official stamp, you know. वो बस औपचारिक ठप्पा मार दिया गया। He said, "But because I'm just a manager guru. कहते मैं बस एक व्यवस्थापक गुरु हूँ। I'm just like a manager guru." मैं एक व्यवस्थापक गुरु हूँ। So if you're a manager, why you have to be manager guru? आप व्यवस्थापक हैं तो आपको व्यवस्थापक गुरु बनने की क्या Why जरूरत not just be a manager? है? बस आप व्यवस्थापक क्यों नहीं बन रहे? Why not be a very good manager? एक बहुत अच्छा व्यवस्थापक क्यों नहीं बनते आप? But you need a stamp from the institution like you're a guru? क्या आपको संस्था से ठप्पा मरवाने की जरूरत है कि आप एक गुरु हैं? So some of my godbrothers, they want to be guru. तो मेरे कुछ गुरु भाई गुरु बनना चाहते हैं। And I'm challenging them that where did Srila Govinda Swami order and instruct you to be a guru? और मैं उनको चुनौती देकर कह रहा हूँ कि कहाँ श्री गौरव महाराज ने आपको आदेश दिया, अधिकार दिया गुरु बनने के लिए? Where scientifically, according to Guru Sadhu Shastra, what is your authorization to be guru? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गुरु साधु शास्त्र के आधार पे कहाँ पे आपको आदेश अधिकार प्राप्त है गुरु बनने का? And they feel offended और उनको बुरा लग जाता है ये बात करने से, because they don't like this type of questioning. क्योंकि उनको इस तरह का सवाल पसंद नहीं आता। And then they're going and initiating these people. और वो जाके ऐसे लोगों को दीक्षा दे रहे हैं। And they know that I know that it's completely bogus. और उनको पता है कि मैं जानता हूँ ये सब फालतू चीजें हो रही है, It's unauthorized. ये सब गैर आधिकारिक And I चीजें can explain how it's और unauthorized. मैं दिखा भी सकता हूँ कैसे गैर आधिकारिक चीजें हो रही So I'm a big threat to तो them. मैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हूँ। So naturally I become their enemy. तो स्वाभाविक रूप से मैं इनका शत्रु बन गया हूँ। There's one interesting saying. Sometimes you see the little proverb or saying. I saw one interesting one today. तो मैंने एक बहुत ही अच्छी कहावत देखी, And it was saying that don't be so concerned that people will be offended or disturbed by your speaking the truth. तो उसमें लिखा था आप ज़्यादा चिंतित या परेशान मत होइए कि बाकी लोग आपके सत्य बोलने से कैसे चिंतित और परेशान हो रहे हैं। Be more worried for those people who will be misled उन लोगों के बारे में ज़्यादा चिंता कीजिए जो लोग गलत दिशा में and चले जाएंगे misdirected और भ्रमित हो जाएंगे, and cheated ठगे जाएंगे if you don't speak the अगर truth. आप सच नहीं बोलेंगे।
So I thought that was very interesting. तो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी आज. Instead of worrying about what will the people, how to worry about the people who are offended by your presentation of the absolute truth. तो इसके बारे में चिंता करने की बजाय जब आप परम सत्य प्रचार करेंगे कुछ लोगों को इसका बहुत बुरा लगेगा. Why don't you think rather how much you can try to help other people by giving them the right information, by speaking the absolute truth. इस बात की चिंता कीजिए कि कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको ये सत्य परम सत्य जिन लोगों की मदद कर पा रहा है ताकि वो गलत दिशा में ना जाए. But in the world of Maya, the truth is a deviation. लेकिन माया जगत में सत्य जो है एक विमुख पथ कहा जाता है. Unfortunately, it's like this. दुर्भाग्य से ऐसा है. So if you quote what they quote, and you do what they're doing, and you just remain quiet, then you can also become this type of guru. तो अगर आप वो बोलेंगे जो वो बोल रहे हैं और अगर वो आप चुपचाप रहेंगे अगर वो चुपचाप रहने को कहेंगे तो आप उनके साथ. But you cannot understand the truth. You cannot present the truth. लेकिन अगर आप सत्य समझते नहीं आप सत्य को प्रस्तुत नहीं कर सकते. Because in the material religious organization that is not acceptable. क्योंकि भौतिक धार्मिक संस्था में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. That's why they wanted to excommunicate my spiritual master as well. और इसीलिए वो मेरे आध्यात्मिक गुरु को भी बाहर निकालना चाहते थे. Because he would not compromise. क्योंकि वो कोई समझौता नहीं कर रहे थे. And his preaching was exposing them. और उनका प्रचार लोगों का सच सामने लेकर आ रहा था. So he was a direct threat to them. तो वो उनका सीधा सीधा उनके लिए खतरा बन चुके थे. And they felt it as a threat. और उनको महसूस भी हो रहा था ये खतरा. So if you can't defeat the person philosophically, तो किसी व्यक्ति को आप सिद्धांत के आधार पर हरा नहीं सकते. then you have to try to destroy them. तो फिर उनको किसी तरह तबाह करना होगा. That's all they have left. यही उनके पास बाकी रह जाता है. So this is in some ways it's a proof of their lack of credibility. तो ये एक तरह का प्रमाण है उनकी योग्यता की कमी का. That you have to resort to this type of this type of option, कि a nuclear option. अंत में ये परमाणु विकल्प चुनना पड़ता है उस व्यक्ति के खिलाफ. Right? So when you're debating, तो जब आप and बहसबाजी you're कर रहे losing the हैं debate, और जब आप हार रहे हैं बहस then you में, just have to try to destroy that person. तब फिर उस व्यक्ति को केवल किसी तरह से तबाह करने की जरूरत पड़ती है. Oh, he's offended the Prabhupada. प्रभुपाद के प्रति He अपराध wants कर to रहा है. destroy ISKCON. ये इस्कॉन को तबाह करना चाहते He's हैं. a criminal. ये अपराधी है. That's all they have left. यही सब उनके पास रह जाता है बोलने के लिए. But they cannot defeat what we're presenting. लेकिन हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसको वो हरा नहीं पाते हैं. And they cannot answer to it either. और ना तो उसका वो उत्तर भी दे पाते हैं. That means it's a direct threat to them. इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा खतरा है. And they wish I would just leave ISKCON. और वो आशा भी करते हैं कि मैं इस्कॉन छोड़ के चला जाऊँ. Because then they don't have to deal with it. क्योंकि फिर उनको मुझसे निपटना नहीं पड़ेगा. But we're saying, no, I'll never leave ISKCON. लेकिन मैं कहता हूँ मैं कभी इस्कॉन छोड़ के नहीं I'll जाऊँगा. never leave Prabhupada. I'll never leave Srila Govinda मैं Swami. कभी श्रील प्रभुपाद और श्रील गोविंद स्वामी महाराज को छोड़ के And नहीं I'll go जाऊँगा. on speaking absolute consideration. और मैं तत्व विचार बोलते रहना जारी रखूँगा. And they could not tolerate them. और वो इसको सहन नहीं कर पाते हैं. Then they send the mind police, right? If you associate with somebody, right, that they don't authorize, then they have to send the mind police out there to see, you know. और फिर उसके बाद ये माइंड पुलिस को भेजते हैं वहाँ पर. So they're coming, right? Who are you? Who are you listening to? Who are you know, who is he telling about? What are we doing? तो वो आपके पास आ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं, आप क्या करते हैं, किसके संग करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बातें सुनते हैं. Is he trying to expose our criminal organization in the name of religiosity? क्या वो हमारे आपराधिक संस्था को बाहर निकाल रहे हैं जिसको हम धार्मिक संस्था का नाम देते हैं. So then you just call the other side, opposition, they are the criminals. और फिर वो दूसरे जो विरोध में उनको अपराधी कहते हैं. Right? This is like classic. ये सबसे पुराना तरीका. Whatever you're doing, you just accuse the other person that they're doing. जो भी आप कर रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति को कह देते हैं कि ये अपराधी है. So in this type of atmosphere where there is a competition of the narrative, who's the real criminal? इस तरह की प्रतियोगिता में कि जब दो लोग आपस में बहसबाजी कर रहे हैं कौन है असल में अपराधी. What is real? What is true? क्या है असली, क्या है Who is सत्य, who? कौन क्या है. How will we come to any conclusion? कैसे हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे.
unless we fully depend on Krishna, we cannot come to a conclusion. जब तक हम पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर निर्भर ना हो तब तक हम निष्कर्ष नहीं पहुंच सकते। We'll just be completely on mental, paralyzed on mental, sentimental level. हम पूरी तरह से मानसिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे बने रहेंगे। Cannot move this way, cannot move that way. ना तो हम इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे। Because Krishna has to convince us. क्योंकि कृष्णा को हमें आश्वस्त करना होगा। So when I accepted my spiritual master, Krishna convinced me. तो जब मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया, कृष्णा ने मुझे आश्वस्त किया। And he gave me the instructions that I'm trying to my best to follow. और उन्होंने मुझे निर्देश दिया जो मैं अपना श्रेष्ठ तरीके से पालन करने का प्रयास कर रहा I हूँ। didn't get any other instruction. और मुझे कोई अन्य निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। So what to do? You have to die trying. तो मैं और क्या कर सकते हैं? हमें अपने मृत्यु तक से इसको करते And रहने का then प्रयास करना Prabhupada said, you know, you can make me a success or a failure as you like. और प्रभुपाद कह रहे थे कि आप मुझे सफल बनाइए या असफल बनाइए, आप जैसा चाहें। Krishna will be the final judge. कृष्ण जो है अंतिम न्याय करता है। He's the witness and the judge. वो गवाह है, वो न्याय करेंगे। So everything is available तो सभी कुछ उपलब्ध है in the material world. भौतिक जगत में। And even if you come to a religious organization, everything is also available. यहाँ तक कि धार्मिक संस्था के भीतर भी सब कुछ उपलब्ध है। You can do pranayam, you can do hatha yoga, आप प्राणायाम, हठ योगा कर सकते you हैं, can do psychology, आप मनोविज्ञान कर सकते you हैं, can worship demigods, देवताओं की पूजा कर सकते हैं, you can hire ghostbusters, आप भूत पकड़ने वाले लोगों को लेकर आ सकते हैं। right? You can talk about all of those things. इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। All of that is accepted under bridge preaching. इस ब्रिज ब्रिजिंग के नाम पे सब स्वीकार किया जा रहा है। But if you want to come and talk about Bhagavad Gita as it is, लेकिन अगर आप आके भगवत गीता यथारूप के बारे में बात करने from का an प्रयास करेंगे, absolute consideration, तत्व विचार that's दृष्टिकोण the से only thing that is not acceptable. यही एकमात्र चीज है जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। That's the only threat to them. यही एकमात्र खतरा है उसके लिए। Any other question? कोई अन्य प्रश्न Someone else? किसी के Yeah. पूछा? What is your name? आपका नाम क्या है? Enrico. 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 Hare Krishna. Hare. My question is, do the Guru have to know exactly the personality of the disciple? Have to know the personality, the attitude, not the attitude, Psychophysical nature? Psychophysical nature. Have to know this for giving instruction, or is not necessary? No, what kind of guru do you want? तो आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गुरु को शिष्य के मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानने की जरूरत होती है उसको निर्देश देने से पहले? तो गुरुदेव पूछ रहे हैं निर्भर करता है किस तरह के गुरु आप चाहते हैं। Do you want a guru who just is going to speculate and guess? आप ऐसा गुरु चाहते हैं जो केवल मनोधर्म करेगा, अंदाजा लगा के आपको उत्तर देगा? Or do you want a guru who will be authorized and empowered by Krishna, Krishna Parampara? या आपको ऐसा गुरु चाहिए जिसको आदेश अधिकार प्राप्त हो कृष्णा कृष्ण परंपरा का? So which type of guru do you want? तो किस तरह का गुरु आप चाहते हैं? Obviously, the one with Krishna He's a speak to smart you. boy after all. यानी अवश्य ये कृष्ण परंपरा तो गुरुदेव बता रहा है ये बुद्धिमान लड़का है। So now, where are those people? Who are those people? अब सवाल है वो लोग हैं कौन? So we're deaf, dumb, and blind. Who are those people who are authorized, empowered representatives of Krishna and Parampara? तो हम अंधे गूंगे बहरे हैं तो वो प्रामाणिक अधिकार सशक्तिकरण प्राप्त कृष्ण परंपरा के प्रतिनिधि कहाँ हैं? कौन Who है? know the psychophysical nature of the student, जो अपने शिष्य के मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझते हैं and they know what is Krishna's intention for you. और वो जानते हैं कि कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं। And by following that guru's instruction, that Krishna will accept that service as an act of surrender and devotional service. और इस गुरु के निर्देश को अगर आप पालन करेंगे तो कृष्ण उसे शरणागति के रूप में स्वीकार करेंगे। So we have to pray to Krishna. तो हमें कृष्ण से प्रार्थना करना I होगा। want one of those kind of gurus. मुझे इस तरह का गुरु चाहिए। And Krishna, if you're sincere and serious,
to want to surrender to Krishna, Krishna will give you, Prabhupada says, very nice guru. और प्रभुपाद बताते हैं अगर आप बहुत गंभीर एक निष्ठ है कृष्ण को शरणागत सेवा करने के लिए तो आप कृष्ण बहुत ही अच्छे गुरु देंगे. Otherwise, you'll get the cheating guru. वरना आपको एक ठग गुरु मिलेंगे. You get the guru sent by Maya. आपको माया के द्वारा भेजा हुआ गुरु मिलेगा. Everything is available there. सभी कुछ यहाँ मौजूद है. This is prison house. ये है कारागार. When you're in the prison house, right, all the prisoners, everything is available there. तो जब जो कारागार में सब कुछ उपलब्ध है. You want some cigarettes, you want some drugs, you want some criminal activity, everything's available. सिगरेट चाहिए, नशीली चीज पदार्थ चाहिए, सब कुछ वहाँ भी उपलब्ध है. Or do you want to go to the church? You want to go and pray in the church? या फिर आप गिरजाघर में जाके प्रार्थना करना चाहते हैं. Everything's available. सब कुछ उपलब्ध है वहाँ. Everything is based on desire. सभी कुछ आपकी इच्छा के ऊपर आधारित है. And Krishna is fulfilling our desire. और कृष्ण हमारी इच्छा को पूरा कर रहे हैं. So if you seriously want to surrender to Krishna, then Krishna will give you a nice spiritual master. अगर आप गंभीरता से कृष्ण को शरणागत करना चाहते हैं तो कृष्ण आपको एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु देंगे. If we're not serious or sincere for that, then you'll get some other kind of guru. अगर आप गंभीर एक निष्ठ नहीं है तो आपको किसी दूसरे तरह का गुरु प्राप्त होगा. Or we'll continue to act as our own guru. या फिर हम खुद के गुरु के रूप में कार्य करते रहेंगे. That's up to us. और ये हमारे ऊपर है क्या निर्णय हमें करना है. Prabhupada says, bona fide guru, he knows psychophysical nature of the disciple. प्रभुपाद बताते हैं प्रामाणिक गुरु शिष्य के मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझते हैं. And therefore, because he knows that, he's able to engage the disciple according to their psychophysical nature. और क्योंकि गुरु को ये ज्ञान होता है इसलिए वो शिष्य को उनके गुण स्वभाव के आधार पे लगा सकते हैं. And therefore the guru will say, okay, you are fit to work in the deity department. और इसलिए गुरु कहते हैं कि आप जो है विग्रह सेवा में सही तरीके से You're fit to work in the kitchen. आप किचन में काम करने के लिए सही है. You're fit to be, a preacher. आप प्रचार करने के लिए सही व्यक्ति हैं. You're fit to do cow protection. आप जो है गौ रक्षा करने के लिए सही व्यक्ति हैं. You're fit to do business. आप जो है व्यापार करने के लिए सही व्यक्ति हैं. But do it for Krishna. लेकिन ये सिर्फ कृष्णा के लिए करना. So the spiritual master, he knows the psychophysical nature, and he knows what is Krishna's intention for us to the point that Krishna accepts our surrender and our service. हमारे गुरु को शिष्य के मनोवैज्ञानिक स्थिति पता होती है और कृष्णा का क्या उद्देश्य है उनके प्रति इस हद तक कि वो सेवा करने पर कृष्णा आपसे वो सेवा स्वीकार करेंगे. And then we should be able to feel or realize the benefits of that surrender and that service. और हमें भी उनको शरणागति और उनकी सेवा करने का साक्षात्कार या अनुभव दिखना चाहिए हमारे. In terms of change of our consciousness, कि हमारी चेतना कैसे परिवर्तित हो रही है. destroying of doubts, हमारे संदेह नष्ट हो रहे हैं. weakening of the strength of material desire, material attachment, भौतिक इच्छाओं आसक्तियों की शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं. development of transcendental knowledge, और दिव्य ज्ञान प्रगति हो रही है. understanding all of these tattvas scientifically, सारे तत्वों को वैज्ञानिक तरीके से समझ पा रहे हैं. all of this type of benefit that comes by proper hearing and service ये from सारे bona fide guru. सारे तरह के लाभ सही प्रमाणिक गुरु के पास श्रवण करने से प्राप्त होते हैं. Does that help? क्या आप समझ पा रहे हैं? Does that answer it? क्या आपके सवाल का उत्तर हुआ? Enrico. Enrico. Anybody else? कोई अन्य? Yeah? Hare Krishna, Shri Gurudev. Few days ago, I was reading Bhagavad Gita. In that Bhagavad Gita, one line which hits me hard. I want to know something more. One line? Hits me very hard. Like I want. One line of the Gita stands out for her. Okay. So it says like if you want to surrender to Krishna, you have to surrender to Gurudev, bona fide spiritual master. You have to firstly submit yourself, submission, then do service, and then inquire. If you don't surrender to spiritual master, you don't have the submission, then those inquiries will not gonna help you. And if you submit, like surrender completely, then by mercy of Guru Krishna, all your question will be answered, and you will like get rid of this material bondage and this kind of the thing. So is like I want to know that how can I surrender to Srila Gurudev, this submission, not like sentimental or emotional, but actual, which helps me to
surrender to Krishna, grow in Krishna consciousness, like actually, no sentimental. Like actual, factual, like really, really? असल में तत्व में सच्चाई में आप शरणागत करना चाहते हैं। तो माता जी बता रही है कि कुछ दिनों पहले वो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रही थी और उन्होंने एक वाक्य देखा कि वहाँ बताया गया है कि आपको कृष्ण को शरणागत करना होगा, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से उनको शरणागत करना होगा, उनको विनीत भाव से सेवा करनी होगी और उनसे जिज्ञासा करनी होगी। और आगे बताया गया कि अगर आप उनसे शरणागत नहीं करते हैं तो आप उनसे विनीत भाव से सेवा नहीं करते हैं तो आपको जिज्ञासा करने का अधिकार नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये विनीत भाव से कैसे हम उनको शरणागत कर सकते हैं ताकि हम उनसे इस तरह से जिज्ञासा कर सकें। तो मैं इसको असल में जानना चाहती हूँ कैसे मैं असल में तत्व में शरणागत करूँ और ठगूँ नहीं। So we didn't come here for a guru. तो हम यहाँ गुरु के लिए नहीं आए थे। We came here to understand about God, तो हम यहाँ आए भगवान को समझने के लिए, to understand about Krishna, कृष्णा को समझने के लिए, to want to render service to Krishna. कृष्णा की सेवा करने के लिए, Because everyone is eternal servant of Krishna. क्योंकि सभी लोग कृष्णा के नित्य दास हैं That's why we came here. और इसीलिए हम यहाँ आए। Only later we found out that Krishna's way of helping us is through his bona fide representative. बाद में हमें पता चला कृष्णा हमारी मदद करने का तरीका है प्रमाणिक गुरु के माध्यम से। So the first mercy is Krishna's mercy. तो सबसे पहली कृपा कृष्णा की कृपा है। And that's why we have to be able to have enough faith in Krishna and convince Krishna that we want to surrender to him and serve him. और इसलिए हमारे अंदर पर्याप्त श्रद्धा होनी चाहिए और हमें कृष्णा को इतना आश्वस्त करना होगा कि हम उनको शरणागत उनकी सेवा करना चाहते हैं। That we actually factually really want to understand him. कि हम असल में तत्व में असल में उनको समझने का प्रयास come to him and surrender, serve him. और उनके पास आ रहे हैं उनको शरणागत उनकी सेवा करने के लिए। That's the desire of our soul. ये हमारी आत्मा की इच्छा है। So if that becomes like that, then Krishna, as Paramatma's Chaitya Guru, he'll understand, oh, this person really is trying to come to me and approach to me. और अगर ये ऐसा होता है तो परमात्मा जो हमारे हृदय में वो अपनी हमारी उस इच्छा को देख पाएंगे कि ये मुझे समझना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है। Even was explained in Bhagavatam other day that if that sincerity is there, then you'll immediately become enlightened. और भागवतम में उस दिन हम पढ़ रहे थे अगर आप इस तरह से एकनिष्ठ हैं तुरंत आप जागृत हो जाएंगे। And that enlightenment means that Krishna as Paramatma Super Soul will give you intelligence to understand who his representative is who can actually help you. और इस जागृत का मतलब है कि परमात्मा आपको ये बुद्धि देंगे कौन से व्यक्ति के पास जाके आपको शरणागत करना है। So Srila Prabhupada explains that the first installment of Krishna's mercy for one who wants to surrender and serve him is he makes arrangement to get the bona fide guru parampara. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा के पहले कृपा की पहली किस्त अगर वो किसी को देना चाहते हैं तो उसके जीवन में प्रमाणिक गुरु को भेजते हैं। So Krishna says, if you want to really understand me in truth, तो कृष्ण बताते हैं अगर आप तत्व में मुझे समझना चाहते हैं, then surrender to that bona fide representative that I made arrangement for you to have. तो उस प्रमाणिक प्रतिनिधि को शरणागत कीजिए जो मैंने आपके लिए व्यवस्था बनाई है। And Krishna says, and take a humble position और कृष्ण बताते हैं अपना विनम्र भाव ग्रहण and कीजिए render menial service. और तुच्छ सेवा कीजिए। So this humble menial service attitude, you have to have this type of attitude. तो इस तरह से विनम्र और किसी भी तरह की सेवा करने का भाव ये होना चाहिए। Then you have a right to make an inquiry. तब आपका कोई अधिकार है जिज्ञासा करने का। If there's no real surrender अगर असल शरणागति नहीं to है Krishna or Guru, कृष्णा और गुरु को and there's no humble menial service attitude, और विनम्र और किसी भी तरह की सेवा को करने का भाव नहीं है, then Prabhupada says you have no right to ask a question. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं आपको प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। Everyone thinks, okay, whatever question I ask, you have to answer that question. सभी लोग सोचते हैं जो भी मैं सवाल पूछूंगा उनको सवाल का उत्तर देना होगा। Not if you have no faith, you're not surrendered, and you're not in a humble service attitude. अगर आप शरणागत नहीं कर रहे हैं, आपके पास श्रद्धा नहीं है और विनम्र भाव से आप नहीं आ रहे हैं, You don't even have right to ask the question. आपको सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं। Let the speaker be able to have the ability to understand the answer. तो उत्तर को समझ पाने का क्षमता तो बहुत दूर की बात है। So that's Krishna's requirement. तो ये कृष्णा की जरूरत है। That's Krishna's prerequisite. ये कृष्णा पहले ये सारी If जरूरतें you को really want to surrender to me, अगर आप असल में मुझे if शरणागत you करना really चाहते want हैं, to understand me, अगर मुझे समझना चाहते हैं,
then the humble state of mind, surrender to my representative, bona fide representative. तो विनम्र मनोभाव से मेरे प्रामाणिक प्रतिनिधि को शरणागत And of course, Krishna will make arrangement and give intelligence and faith who's bona fide representative. और कृष्ण ये व्यवस्था बनाएंगे, बुद्धि देंगे, श्रद्धा देंगे, कौन है उनके प्रतिनिधि. If we don't have faith and intelligence from Krishna, then why would you surrender and come with a submissive, service attitude? अगर हमें बुद्धि और श्रद्धा कृष्ण से नहीं मिल रही तो कैसे आप शरणागत और सेवा के विनम्र भाव से आ पाएंगे उसके पास? And then why would you ask a question if you have that you're doubting that they can even answer your question? और क्यों आप कोई सवाल पूछेंगे जब आप संदेह कर रहे हैं कि व्यक्ति आपके प्रश्न को उत्तर दे भी पाएगा या नहीं? That doesn't make any sense. इसका कोई मतलब ही नहीं बनता. Okay, let's see how you would answer that question. चलिए देखते हैं इस सवाल का उत्तर कैसे देंगे. And I'll decide whether I'll accept that answer or not accept that. और फिर मैं फैसला करूँगा कि मैं उस उत्तर को स्वीकार करूँगा या नहीं. This is not the right mood, ये सही mentality. भाव मानसिकता नहीं है. So it's not really, disciple. तो वो असल कोई शिष्य नहीं है. So therefore you don't get mercy of Krishna, you don't get mercy of that Guru. इसलिए आपको कृष्णा और उस गुरु की कृपा नहीं मिलेगी. And therefore you remain with all of your doubts, और फिर आपने your संदेहों में demons of doubt फंसे रहेंगे अपने संदेहों के असुरों के साथ. on the mental sentimental platform. मानसिक और भावनात्मक स्तर पे. So now be disturbed in your, mind and senses. आपके मन और इंद्रियां ऐसे परेशान And बैठे try हैं to figure it out on your own और आप खुद से बस पता लगाने का प्रयास करते रहिए by mental speculation अपने मनोधर्म से and the sentimental attitude of mood. और अपने भावुक मानसिकता से भाव से. Then you're lost. और तब आप भटक जाएंगे Nobody can help you. और कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा. It says even, was it Narada Muni, Manigriva, Nalakuvara, he cursed those trees, तो right? ये वृत्तांत है कि Those नारद मुनि sons of Manigriva, right? Right? What is the name? Kuvera, right? Yeah. Two sons of Kuvera. Yeah. Manigriva Yes. and Nalakuvara, right? And Manigriva. Yeah. तो कुबेर के दो संतान नल कुबेर और मणिगिरि को नारद मुनि ने श्राप दिया था. So they were doing some nonsense, they were being frivolous, right? तो वो कुछ फालतू काम कर रहे थे, कुछ बदमाशी कर रहे थे They want to be naked, और वो नंगे होना चाहते and थे. somehow Narad Muni saw them, किसी तरह से नारद मुनि ने देखा उनको and just heavily chastised them. और बहुत बुरी तरह से डांटा उनको. And said, you have such a father and then you're behaving like this, और कहा आप कैसे पिता हैं और आप ऐसा व्यवहार करते हैं. then I curse you. और मैं आप लोगों को श्राप देता हूँ. You become trees. Do you want to be naked? Then stand as trees. तो अब आप दोनों पेड़ बनिएगा, नंगे खड़े रहिएगा और पेड़ों की तरह खड़े It was रहिएगा. like 30,000 years or something 30,000 साल होता है. in Krishna Gopal's courtyard. कृष्ण गोपाल के आंगन. And then later, eventually, Gopal pulled down those trees, और right? बाद में गोपाल ने उन दोनों पेड़ों को गिरा दिया. And then those two guys popped out of there. और दोनों जो उस पेड़ से बाहर निकले. They popped out and said, yeah, bueno. दोनों बाहर Yes, निकले. I got the point. बोले अब हम दोनों बात समझ गए हैं. Right? So in the purport, Prabhupada says, you see such a chastisement and anger और तात्पर्य प्रभुपाद बता of रहे a हैं sadhu, guru, it's ऐसा actually a blessing. ऐसा दंड और ऐसा गुस्सा साधु गुरु का असल में एक आशीर्वाद है. And because they're trying to protect you and save you. और क्योंकि वो आपको बचाने का, आपको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं. So you should not misunderstand even if they show this type of cursing or anger towards you. तो उनको गलत नहीं समझना चाहिए. हो सकता है आपके प्रति इस तरह का अभिशाप या You विरोध should दिखाएं. not take it as ordinary materialistic type of anger. आपको इसको सामान्य भौतिक क्रोध की तरह नहीं समझना चाहिए. Because they're trying to wake us up, they're trying to protect us, they're trying to warn us. कि वो हमें जगाने का, हमें बचाने का, हमारी चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं. And then we're not listening. और हम सुन भी नहीं रहे हैं. We cannot listen. हम सुन नहीं पा रहे हैं. It says even spiritual master can slap you. यहाँ तक ये भी कहा जाता है अध्यात्म गुरु आपको थप्पड़ भी लगा सकते हैं. Sometimes someone going crazy and then you slap them and then they're like, oh, thank you. जैसे कुछ लोग कभी पागल की तरह व्यवहार करते हो, आप उनको थप्पड़ लगाते हो, कहते हैं I धन्यवाद. was out of my mind. मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया. Sometimes, like this, कभी ऐसा. it just knocks you, oh, wait a second, what was I thinking? दिमाग ठीक हो जाता है. ओ मैं क्या सोचने लगा. But it said even if spiritual master slaps you, you can't take him to the court. कहते हैं आपको अध्यात्म गुरु थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन आप उनको कोर्ट लेके नहीं जा सकते. You can't sue him. आप उनको कोर्ट में नहीं हाजिर कर सकते. You just have to take it as a mercy. आपको उसे कृपा की तरह लेना चाहिए.
So sometimes spiritual master is not happy with us. कभी कभी गुरु हमसे खुश नहीं होते हैं. Even one time I saw my Gurudev, he slapped one brahmachari. यहाँ पे मैंने देखा मेरे गुरुदेव ने एक ब्रह्मचारी को थप्पड़ मारा. The boy was shocked. उस लड़के को एक झटका मिला. And then afterward he became like pure devotee, you know. उसके बाद वो बहुत शुद्ध भक्त की तरह बन गया. He came to the right mind. उसका दिमाग ठीक हो गया. Of course, Gurudev dealing with Western devotees is not so much doing like that. और अवश्य गुरुदेव जब जो है हमारे विदेशी भक्तों के साथ व्यवहार करते तो इस तरीके से व्यवहार नहीं करते थे. Because they're too sensitive. वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं. They went through sensitivity training. उनको जो है ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से वो गुजरे. And they'll misunderstand everything anyway and take the guru to the court, you know. वो सब कुछ गलत समझेंगे और गुरु को कोर्ट तक लेके चले जाएंगे. So you see, with material consciousness, we can misunderstand everything. तो आप देखिए भौतिक चिंता में हम सब कुछ गलत समझेंगे. Because we're listening to the stupid mind. क्योंकि हम बेवकूफ मन को सुन रहे हैं. Oh, I think his anger or his disturbance is because of this. सोचते हैं इनका गुस्सा और इनका परेशानी इस कारण से हो रहा है. And then we listen to it. और हम इसको सुनते भी हैं. And because our mind is telling, oh, that's absolute. और क्योंकि मेरे मन में ये बात आया तो ये बिल्कुल No doubt about it. इसमें कोई संदेह नहीं. I've got it 100% correct. एकदम 100% सही बात है. And pride tells us it's 100% correct. और दम्भ हमें कहता भी 100% सही है. That's why my Gurudev used to say, if you don't understand something, that's no problem. इसलिए मेरे गुरुदेव कई बार कहा करते थे अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई समस्या By mercy of नहीं. Guru Krishna, they can help you to understand. और गुरु कृष्ण की कृपा से वो आपकी मदद कर सकते हैं आपको समझने के लिए. But if you misunderstand, लेकिन अगर आप कुछ गलत समझ रहे हैं then this will create a great havoc, chaos in your life. तो आपके जीवन में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी. This misunderstanding, इस गलत फहमी this की वजह से, miscalculation. गलत आकलन करने की वजह से. And the problem is we're too much dependent on our own mental speculation. और समस्या ये है कि हम खुद के मनोधर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं. And whatever we're thinking, whatever we're feeling, then we think, okay, that's 100% Krishna. और जो भी हम सोच रहे हैं अनुभव कर रहे हैं हम सोचते हैं ये 100% कृष्णा है. But we're misunderstanding, लेकिन हम गलत समझ रहे हैं. and it's actually coming from Maya. और असल में ये माया से आ रहा है. And you say, well, I think it's coming from Krishna. और आप कहते हैं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये माया कृष्ण से Then आ रहा है. okay, we'll see by the results whether it came from Krishna or came from तो हम Maya. परिणाम के आधार पर निर्णय करेंगे कृष्णा से आ रहा है या माया से. Let the time will say then, right? तो फिर समय बताएगा. Time will tell. समय बताएगा. If we got it all figured out, why we need a guru anyway? अगर आपने सब कुछ सही पता लगा लिया तो आपको गुरु की जरूरत क्या है? If all of our thinking and calculations and feelings and emotions and all of this so-called intuition is all nice, why we need a guru? अगर हम जो हम सोच रहे हैं, जो हम मनोधर्म कर रहे हैं, जो हमें अंदाजा लग रहा है, अगर और जो हमें अनुभूति हो रही है, अगर ये सब सही है तो हमें गुरु की क्या जरूरत है? It's because it's faulty and getting us in more and more trouble, then we think, oh, I need some better information. तो क्योंकि पूरे दोषों से भरा है और हमें और ज़्यादा समस्या में लेकर जा रहा है, तब हमें कुछ बेहतर समाधान की जानकारी की जरूरत होती है. I need a different perspective. I need some better intelligence. मुझे कुछ बेहतर दृष्टिकोण या बेहतर बुद्धि चाहिए. So you see, many people that who become successful materially, spiritually, they say, I just seek out the most intelligent person that I meet. और आप देखेंगे जितने जो भौतिक रूप से आध्यात्मिक या सफलता प्राप्त हुए, वो कहते हैं कि हमने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया. So if you're always seeking most intelligent person, materially or spiritually, then you have the best chance to advance materially or spiritually. तो अगर आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भौतिक या आध्यात्मिक जगह पर ढूंढने का प्रयास करें तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है प्रगति करने का, चाहे वो भौतिक या आध्यात्मिक जगह. So before I became devotee, when I thought I'll join, my only question is who's most advanced spiritual master. तो जब मैं जुड़ा उसके बाद मेरी सबसे पहले विचार ये आया कि सबसे ज़्यादा उन्नत आध्यात्मिक गुरु कौन है यहाँ पे. I don't want just, if I'm going to do it, if I'm going to surrender, I want the best possible spiritual master. अगर मैं ये करने वाला हूँ, शरणागति करने के लिए आया हूँ, तो मुझे सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु चाहिए. Right? If you're going to learn something, why not learn from the best? अगर आप कुछ सीखने के लिए आए हैं तो सबसे श्रेष्ठ से जाके क्यों ना सीखें? Materially or spiritually. भौतिक या आध्यात्मिक रूप से भी. So because I had that desire, then I got the best spiritual master. तो मेरे अंदर ये इच्छा थी तो मुझे सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु And मिले. he accepted me. और उन्होंने मुझे स्वीकार किया. And trained me. और मुझे प्रशिक्षण दिया. And instructing me. और मुझे निर्देश दे रहे हैं. Everything's based on desire. सभी कुछ इच्छा के ऊपर आधारित है.
So I had the best spiritual master, and I'm just trying to share that information that I got from the best spiritual master. तो मुझे सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु मिले और मैं वही जानकारी आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूँ जो मुझे सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त हुआ है। What is my crime? तो मैं क्या अपराध कर रहा हूँ? I'm trying to share the best information, perfect knowledge from a perfect source. I'm trying to present it to you perfectly, not adding or subtracting anything. Then what is my crime? तो मैं सबसे श्रेष्ठ ज्ञान आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो पूर्ण स्रोत से पूर्ण ज्ञान पूर्ण तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा अपराध क्या है यहाँ? Does that help you? क्या आपकी मदद हुई? Two mercies require mercy of Krishna, Prabhupada said, then mercy of bona fide Guru. दो कृपा की जरूरत है प्रभुपाद ने कहा है, कृष्ण की कृपा और प्रमाणी गुरु की कृपा। And Krishna's instruction comes through bona fide Guru who's pure by your medium of Krishna. और कृष्ण का निर्देश प्रमाणी गुरु से आता है जो कृष्ण के शुद्ध माध्यम है। Then if you take Krishna's instruction, you receive through the Guru as your life and your soul. और जो अपने गुरु से निर्देश प्राप्त किए जो कृष्ण के निर्देश है उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। And you try your best to execute those और अपना instructions. श्रेष्ठ प्रयास करते हैं उनके निर्देशों को पूरा करने के लिए। Prabhupada said this is secret of success in spiritual life. प्रभुपाद बताते हैं ये आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य है। So I'm sharing what Prabhupada says as the secret of success in spiritual life. तो मैं आप लोगों के साथ वो बांट रहा हूँ जो प्रभुपाद ने बताया है कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता का ये रहस्य है। Right? We talked the other day, this is the best possible process. No other process can compare. और हमने पिछली बार बात की कि ये सबसे श्रेष्ठ प्रगति करने का मार्ग है, इससे बेहतर कोई प्रक्रिया नहीं जिसकी तुलना की जा It's the सके। best means of spiritual enlightenment. ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करने का। And it's the secret of success in your spiritual life. और ये आपके आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य And है। that's all according to what Krishna says and what Prabhupada and previous acharyas are saying in the Shastra. और ये सब कुछ जैसा कृष्ण ने बताया, पूर्वाचार्य ने बताया, शास्त्र ने बताया, उसके ऊपर आधारित है। So what is that a crime? तो क्या ये किसी आपको कोई अपराध है? To give you the best way to be enlightened, the best process and the secret of success in your spiritual life? सबसे अच्छा तरीका आपको आध्यात्मिक जागृति है, सबसे तेज तरीके से उन्नति प्राप्त करने का और सफलता का रहस्य बताना, ये अपराध है। Is that you're getting bad information? क्या आपको कोई गलत जानकारी दी जा रही है? You're getting faulty information? दोषपूर्ण जानकारी दी जा रही है? You decide. आप खुद फैसला कीजिए। We're quoting the authorities. तो हम शास्त्र की बातें बता रहे हैं। That's what the authorities, Krishna and Krishna's devotees are telling. ये शास्त्र कृष्ण के भक्त बता रहे हैं। I'm just saying what they're saying. Don't shoot the messenger, you know. मैं बस वो बता रहा हूँ जो वो बता रहे हैं। आप जो है संदेश वाहक को गोली मत मारिए। I don't like this messenger, you know. I'm going to shoot the messenger. ये दूत हमें पसंद नहीं आया, इस दूत को हम मारना है। I don't like his attitude, you know. मुझे इनका रवैया पसंद नहीं आया। If you know the absolute truth by mercy of Guru Krishna, then materialistic people, they'll think, oh, this person is very proud and arrogant. अगर आप परम सत्य जानते हैं गुरु कृष्ण की कृपा से, तो कोई कर्मी व्यक्ति सोचता है ये कितना अहंकारी है। If you're very confident and faithful in what you understand and you believe and you present it like that, materialistic people will think, oh, this person is too overly confident. अगर कोई आपको पूरा आत्मविश्वास है, पूरी श्रद्धा है, आप जो बात कर रहे हैं, आप जो परम सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें, तो कर्मी व्यक्ति कहता है ये बहुत अहंकार He है। thinks he knows, you उनको know. लगता है कुछ जानते हैं। He thinks he knows. उनको लगता Nobody है else knows. ये जानते हैं, किसी को पता नहीं He है। can see, everybody else is deaf, dumb and blind. वो देख सकते हैं, बाकी सब लोग अंधे गूंगे बहरे हैं। That's what materialistic person will think. तो कर्मी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं। What can he say that I don't already know? ऐसा ये क्या बताएंगे जो पहले से नहीं जानता? That's arrogance. ये है अकड़ है। Any other question? कोई अन्य प्रश्न और कोई बात? Looks like I stepped right into it tonight, huh? लगता है आज मैंने यहाँ अपना पैर डाल दिया। Hare Krishna Guru. I will. So, I don't have any question, but one realization I got after listening that class in ashram, Yeah. the best process. Yeah. So I was then again I started reading 18th chapter of Bhagavad Gita, where Krishna is also telling that try to surrender to that super soul utterly. And after that, Krishna is saying, "Thus I have revealed you the most confidential knowledge." Just after that, and then in Bhagavatam also,
Krishna is speaking to Uddhava in Bhakti Yoga chapter, and there also he is speaking the same things. Then if you will try to see in every one super soul, then all your anarthas will also be removed. You will be purified, and all anarthas. Yeah, all anarthas, and Krishna is saying, you have quoted also on that day that this is the best possible way. This is the best way. Yeah. And just after that also, Krishna is saying that this is the most confidential knowledge. There also to the Uddhava. Right. And then in Bhagavad Gita, Krishna is saying that whom not to tell this knowledge also. Who what? Whom not to tell this knowledge. Who's the right candidate to hear the knowledge and who you should not tell it to. Right. And also in Bhagavatam also, Krishna is telling Uddhava also that same, whom should not this knowledge be revealed. Right. So this realization I got because that it's confidential. Most confidential. It's the most confidential. Otherwise, Krishna is hiding himself. तो ये सबसे तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पिछली बार जो क्लास दिया श्रीमद् भागवत गीता, उसके बाद मैंने फिर से पढ़ना भी शुरू किया। वहाँ आपने बताया गया था अर्जुन को कि सबसे जो रहस्यमय ज्ञान है परमात्मा को शरणागत करना, और ये सबसे रहस्यमय ज्ञान है। और उद्धव को भी श्रीमद् भागवतम में भक्ति योग अध्याय में कृष्णा उनको भी यही निर्देश दे रहे हैं, ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। और साथ ही साथ उसके बाद कृष्णा ये भी बता रहे हैं कि किन लोगों को ये ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि और गुरुदेव बता रहे हैं क्योंकि ये सबसे रहस्यमय ज्ञान है। So someone asked that question that day, well, why Prabhupada doesn't say like this? Why is it like a hidden, right? Somebody else like this? और किसी और ने भी ये सवाल पूछा था कि प्रभुपाद ने इस तरीके से क्यों प्रस्तुत किया, क्यों थोड़ा छुपाकर प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया था? Because it's most confidential knowledge. क्योंकि ये सबसे रहस्यमय ज्ञान। It's there, ये वहाँ मौजूद है, but it has to be brought out. लेकिन इसे बाहर निकालने की जरूरत है। And those who are sincere and serious, they'll understand, oh, this is the key, this is the secret of success. और जो एक इष्ट गंभीर है वो समझ पाएंगे ये सफलता की चाबी है। And other people will become, it says, they'll become very, very disturbed. अब बताया जाता है बाकी और जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाएंगे इसको, because they cannot understand it. क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाते। It will disturb them. वो परेशान हो जाएंगे। Let me see if I can quickly find that. चलिए मैं देखता हूँ ऐसा तुरंत ढूंढ पाऊंगा या नहीं। How they're disturbed by hearing the absolute truth. कैसे वो परम सत्य को सुन के परेशान हो जाते हैं। Instead of feeling enlivened and instead of their faith growing and being stronger, they become very disturbed by that. तो जागृत होने के बजाय उनकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ने के बजाय मजबूत होने के बजाय वो परेशान होने लगते हैं। This is, if I quickly find it, I'll tell you. अगर मुझे जल्दी से मिल जाता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। Because it's how do different people react to that information. क्योंकि कैसे अलग-अलग लोग उस जानकारी के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। You see, if someone is say bogus, unauthorized spiritual master, मान लीजिए कोई बोगस या गैर अधिकार प्राप्त आध्यात्मिक गुरु है, why would you give people faith in the super soul, who's the source of all knowledge and intelligence? तो कैसे वो लोगों को श्रद्धा देगा परमात्मा में जो सारे ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं? I mean, who can tell you better than Krishna? So if your intention is to cheat and be bogus and unauthorized, why would you tell people how to know that you're bogus and unauthorized? तो अगर आपका उद्देश्य है लोगों को ठगना, बोगस है, आप गैर अधिकारी गुरु हैं, कैसे आप उन लोगों को ये तरीका बताएंगे जिससे वो खुद पकड़ा जाएगा कि वो बोगस है? और That's what they do. तो ये वो लोग करते हैं। They just gloss over that. They just don't get into specifically what does it mean. बाहर से बस किसको केवल बताते हैं, भीतर से गहराई में घुस के विशेष तरीके से दिखाकर नहीं बताते हैं उसको। That's why they say we're not interested in the super soul. और इसीलिए वो कहते हैं हमें परमात्मा में कोई दिलचस्पी नहीं। You're not qualified to know the super soul. आप परमात्मा को जानने के लिए योग्य नहीं। All you should know is the GBC. आपको बस केवल GBC को जानना चाहिए। They are your super soul. वही है आपके परमात्मा। And although they're all saying something different, और यद्यपि सारे लोग अलग-अलग बात करेंगे, don't find any fault. उनके अंदर कोई दोष मत देखिए। Because you'll offend the pure devotees. क्योंकि आप शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध And कर you'll देंगे। rot in hell eternally. और आप नित्य नरक में सड़ेंगे। And you'll lose your ticket to make money in America. अमेरिका में जाके पैसे कमाने का टिकट हाथ से चला जाएगा।
then you won't be able to build your mansion in Mayapur. मायापुर में अपना महल नहीं बना पाएंगे फिर आप. And all of this money will be gone. सारा पैसा जो है चला जाएगा. Prabhupada says one cannot understand Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam properly प्रभुपाद बताते हैं कोई श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवत गीता सही तरीके से समझ नहीं सकता without the help of such bona fide confidential devotees of the Lord. बिना भगवान के सबसे करीबी पार्षदों की मदद के बिना. It must be revealed. इसे प्रकाशित होना होगा. Vidura also heard from Uddhava about the appearance disappearance of Lord Krishna, the super soul. और विदुर ने भी उद्धव से सुना कृष्ण के आविर्भाव और तिरुभाव के बारे में. So this is Srimad Bhagavatam 3:4-33. श्रीमद् भागवतम 3:4-33. Vidura also heard from Uddhava about the appearance and disappearance of Lord Krishna, the super soul. तो विदुर ने भी उद्धव से सुना कृष्ण के आविर्भाव और तिरुभाव के बारे में परमात्मा के रूप में. In the mortal material world. और इस भौतिक जगत में. Which is the subject matter sought after with great perseverance by the great sages. जो महान ऋषि इस विषय के बारे में बातचीत करने के लिए ढूंढते हैं. And the purport said the subject matter of the appearance and disappearance of the super soul, Lord Sri Krishna, और श्री तात्पर्य बता रहे हैं कि कृष्ण के आविर्भाव और तिरुभाव परमात्मा के रूप में is a mystery even for the greatest of sages. ये बहुत बड़ा रहस्य है महान ऋषियों के लिए. The word Paramatmana is very significant in this verse. और ये शब्द परमात्मा इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण है. Ordinary living entity is Atma. Lord Krishna is never ordinary living being because he is Paramatma, he is super soul. सामान्य जीव को आत्मा कहा जाता है लेकिन कृष्ण का भी सामान्य जीव नहीं, वो परमात्मा है. Yet his appearance as one of the human beings and his disappearance again from material world, those are subject matters for research workers who execute research work with a great perseverance. तो यद्यपि कृष्ण मनुष्य के रूप में आते हैं और यहाँ इस भौतिक जगत से अप्रकट हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी खोजबीन की चीज़ें हैं. जो लोग इसके बारे में खोजबीन करना चाहते हैं बहुत गहराई से इसके बारे में ढूंढते हैं. And then it says in the next translation that the Lord's glorious acts and his acceptance of various transcendental forms बताया जाता है भगवान की दिव्य लीलाएं उनके अनेक दिव्य रूपों में for the performance of extraordinary pastimes in this material world तो अविश्वसनीय कारनामे करने के लिए इस भौतिक जगत में are very difficult for anyone other than his pure devotees to really understand. और ये केवल उनके शुद्ध भक्त के अलावा बाकी लोगों के लिए समझ पाना बहुत ही कठिन है. So how and where Krishna is manifested, तो कैसे और कहाँ कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, and how and why he's manifested, और कैसे और क्यों कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, and how he's performing all of these extraordinary pastimes in the material world is very difficult for ordinary people to understand. और कैसे वो ये अद्भुत लीलाएं इस भौतिक जगत में कर रहे हैं सामान्य लोगों के लिए समझ पाना बहुत ही कठिन. So only Krishna's pure devotees can really understand it. केवल कृष्ण के शुद्ध भक्त ही इसे समझ पाते हैं. Because Krishna says, I only reveal myself to those who render pure, loving, devotional service. कृष्ण बताते हैं मैं अपने आप को उन्हीं लोगों के सामने प्रकाशित करता हूँ जो प्रेम शुद्ध भक्ति करते हैं. And for the beasts in animalistic consciousness, और जो जानवर और पशु की चेतना है, so those who are in animalistic consciousness, जो पशुओं की चेतना है, these topics are simply a mental disturbance to them. ये विषय सरलता से उनके मन को परेशान करते हैं. Because they cannot pick it up. क्योंकि वो इसको सोच भी नहीं पाते. Prabhupada says in the purport,
प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं that these transcendental forms and pastimes of the Lord as described in the Bhagavad Gita are very difficult subject matters. भगवान की दिव्य लीलाएं और उनके रूपों के बारे में समझना ये बहुत ही भगवद गीता के अंदर बताई गई है For those who are not pure devotees to be able to understand it. तो जो शुद्ध भक्त नहीं है उनको ये समझ पाना बहुत कठिन है The Lord never reveals himself to persons like jnanis and yogis. भगवान कभी भी ज्ञानी और योगियों के सामने स्वयं को प्रकाशित नहीं करते And there are others who, because of their enviousness of the Lord, from the bottom of their heart, they're classified amongst the beasts. और जो पूरे हृदय से भगवान से द्वेष करते हैं उनको यहाँ पे जानवर कहा गया है So for such materialistic, envious personalities who are like beasts, the subject matter of the Lord's appearance and disappearance is just simply a mental disturbance to them. तो ऐसे भौतिक कर्मी जो जानवरों की चेतना में हैं उनके लिए भगवान के आविर्भाव तिरुभाव ये सारी लीलाएं उनको मन की समस्या देती है मन की परेशानी So those materialistic persons, Krishna says in Bhagavad Gita, they're miscreants. तो प्रभुपाद ने बताया भगवद गीता में ऐसे लोगों को They're simply concerned for material enjoyment. और जो इंद्रिय तृप्ति में केवल लगे रहते हैं Those who are simply concerned for material enjoyment, they work hard like beasts of burden. और जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं वो गधे की तरह बोझ उठाते हैं They can hardly know the personality of Godhead at any stage. वो परम भगवान को कभी भी जान नहीं पाते हैं Due to this spirit of revolt, revolting. क्योंकि उनके इस विद्रोह करने के स्वभाव के कारण Prabhupada says you cannot challenge God and know at the same time. प्रभुपाद बताते हैं आप भगवान को चुनौती देकर So साथ you ही cannot have a समझ challenging, revolting mentality and know at the same तो time. चुनौती विद्रोह के भाव से आके आप कृष्ण को जानने का प्रयास नहीं कर सकते So all of these transcendental discussions तो ये सारी दिव्य चर्चाएं of the Lord's expansions and activities भगवान के विस्तार के बारे में उनके लीलाओं के बारे में are very difficult subject matters बहुत ही कठिन विषय हैं and very confidential subject matters. और बहुत ही रहस्यमय विषय हैं And those who are not devotees और जो भगवान के भक्त नहीं हैं are advised not to discuss these topics उनको सलाह नहीं दी जाती है ऐसे विषयों पर चर्चा करने की lest they commit further offenses at the lotus feet of the Lord. और वो भगवान के चरण कमल में अपराध करते हैं So therefore it's hidden और इसीलिए ये छुपा रहता है because they're not pure devotees, they're not interested in pure devotional service. जो शुद्ध भक्त नहीं है उनको शुद्ध भक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं So है for those who are, then Krishna will say, this is the quick, easiest, most direct way that you can get mercy and enlightenment from me. लेकिन जो गंभीर हैं उनको लिए कहा गया है ये सबसे आसान सबसे जल्दी से जाने का तरीका है प्रगति आध्यात्मिक प्रगति करने का आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करने का Whereby even you're following regulative principles and regulative behavior, even there you'll not be able to understand it. यहाँ तक कि आप सारे नीति नियमों का पालन कर रहे हैं तब भी आप उसको समझ नहीं पाएंगे But if you can get mercy from Krishna and hear Krishna, especially through bona fide guru, तो लेकिन अगर आप कृष्ण की कृपा प्राप्त कर पाते हैं कृष्ण को सुन पाते हैं प्रमाणिक गुरु के माध्यम से and in Krishna, that Chaitya Guru will reveal himself to you, और कृष्ण चैत्य गुरु ने अपने आप को प्रकाशित किया है आपके give सामने intelligence and faith how and where he's manifesting and speaking. और आपको बुद्धि दे रहे हैं श्रद्धा दे रहे हैं कहाँ से वो प्रकट हो रहे हैं बात Then by कर रहे that combined mercy, हैं। तो इन दोनों की कृपा के माध्यम से then all of this thing can be revealed. तो ये सारी चीजें प्रकाशित हो सकती हैं So that is the actual subject matter. तो ये है असल विषय That's why I was a little joking that we're supposed to be talking about how you go from mixed bhakti to get free from karma and yoga to go to Shuddha bhakti. तो इसलिए मैं शुरू में थोड़ा मजाक करते हुए मैंने कहा कि कैसे हम इस कर्म ज्ञान से प्रभावित मिश्रित भक्ति से शुद्ध होकर शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते So हैं these most confidential secrets of success can be discussed amongst non-envious and simple-hearted devotees who are seeking that absolute truth. तो सबसे रहस्यमय चीजों के ऊपर चर्चा की जा सकती है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की सबसे तेज प्रक्रिया से जो सरल है शुद्ध हृदय वाले भक्त हैं और जो गंभीर है और इस परम सत्य को जानना चाहते हैं This is what needs to be discussed. तो ये चर्चा करने की जरूरत है And then why are these other people so threatened by that discussion? और क्यों इन बाकी लोगों को इतना खतरा महसूस होता है इन चर्चाओं से Why are they saying this is deviation? क्यों वो कहते हैं ये कोई विमुख रास्ता This is है dangerous. ये खतरनाक है We're not interested in the super soul. हमें परमात्मा में कोई दिलचस्पी You're नहीं not है quoting what we're quoting. अब वो बात नहीं कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं
These people not advanced to depend on Krishna as the Lord within their heart. ये लोग इतने उन्नत नहीं है कि अपने हृदय में परमात्मा कृष्ण के ऊपर निर्भर हो पाए। So you're misguiding them. तो आप उनको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। So they're telling exactly opposite thing. बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। Why they're not quoting all of these things? वो क्यों नहीं लोग वो लोग ये सब बातें क्यों नहीं बता रहे? Right? It's all Prabhupada's words. ये सारे प्रभुपाद के ही तो शब्द It's all Krishna's words and instructions, all the secrets of success. ये सारे कृष्ण के शब्द हैं, उनके निर्देश हैं, सारे How सफलता to के get रहस्य हैं। immediate enlightenment कैसे तुरंत आपको जागृति and प्राप्त हो सकती है, purification शुद्धिकरण प्राप्त हो सकता है, and intelligence बुद्धि and faith श्रद्धा directly from the Lord Himself. सीधे सीधे भगवान से। What's criminal about that? इसके में क्या आपराधिक बात है? But if I want to just pose as a guru लेकिन मैं बस गुरु के जैसा अगर दिखावा करना चाहता हूँ and act like I'm a gopi in separation, और मैं दिखावा करना चाहता हूँ कि मैं गोपी वीरों के भाव Rasa में हूँ Shastras, और मैं रसा शास्त्र की बात करूँ, that's all right. वो सब ठीक है, That's appreciated. उसको बहुत सराहना किया जाएगा, That's all right. ये सब ठीक है। One time the Maharaj came to, GBC came to Estonia. एक बार एक जीबीसी महाराज एस्टोनिया में आए, There was a big controversy that Murali Krishna-Swami is preaching there. एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया था कि मुरली कृष्ण स्वामी वहाँ प्रचार कर रहे हैं And this preaching is bringing all of the devotees back to the temple और उनका प्रचार सारे भक्तों को वापस मंदिर में लेकर आ रहा है because they all left when all the gurus fell down. क्योंकि वो सब मंदिर छोड़ के जा चुके थे, सब गुरुओं का पतन हो चुका था। So somehow when they heard that we were giving classes, they started to come back to the temple. और जब भक्तों ने सुना कि मैं वहाँ क्लासेस दे रहा हूँ, भक्तों मंदिर वापस आना शुरू हो गए And they were becoming more and more enlivened. और बहुत ज़्यादा जागृत होने And लगे they're getting more and more faith back. और उनकी श्रद्धा वापस And स्थापित they होने लगी started dressing in devotional clothes again. और फिर वापस से वो धोती कुर्ता लगाने लगे And then we're preaching 15 hours a day, और हम एक दिन में 15 घंटे प्रचार करते हैं, literally. बिल्कुल असली घटना। And so naturally, everyone, they're simple-hearted people, they all started finding interest and desire to want to come back and participate in our discussion. तो जो सरल और एकनिष्ठ भक्त थे, वो वापस हमारी चर्चा में भाग लेकर और ज़्यादा अपने आप को कैसे गंभीर बनाना सके इसके बारे में और भाग लेना शुरू And कर some of the people of the counseling system, they got nervous और ये जो काउंसलिंग सिस्टम के कुछ लोग हैं, वो लोग थोड़े सहमने लगे because they said, you know, our guru is losing some kind of position here now. This person is becoming too prominent. और उनको लगा कि ये जो व्यक्ति है हमारे गुरु के स्थान के प्रति खतरा बनने लगा, ये ज़्यादा प्रभाव करने लगा इस क्षेत्र में। So all the little mini gurus and the lieutenants, right? They all started calling their gurus. तो ये जो छोटे-छोटे मिनी गुरु हैं, ये अपने गुरुओं को उन्होंने बातचीत पहुंचाना शुरू किया। Maharaj, you got a problem there. महाराज, यहाँ अब एक समस्या शुरू हो गई है। This person is like, everybody wants to take shelter of him, and they're like saying he's like Shiksha Guru. सभी लोग ना इनका आश्रय लेने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोई शिक्षा गुरु की तरह काम Too कर रहे हैं prominent in the temple. और मंदिर में उनका प्रभाव बहुत बढ़ रहा All है। the authorities are nervous now. अब सारे अधिकारी जो है सहमने They're लगे just sitting around preaching about Krishna for 15 hours a day. क्योंकि वो बैठ के 15-15 घंटे कृष्ण के बारे में प्रचार कर रहे हैं। So this is creating a big disturbance in the temple. तो मंदिर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। So then they sent one person there, one GBC member there, तो वहाँ पे एक to GBC investigate this criminal activity going on there. तो जीबीसी के सदस्य को वहाँ पे जांच करने के लिए भेजा गया कि क्या आपराधिक गतिविधि यहाँ की जा रही है। And then when he showed up, और जब वो वहाँ I पहुँचे, said, Prabhu, thank you, Maharaj, thank you for coming. मैंने कहा महाराज धन्यवाद आप यहाँ आए। And he said something like, I said something like, I'm very happy to meet you and get your association. तो मैंने कुछ ऐसी बात की कि मुझे बहुत खुशी है आपका संग हमें मिल पा रहा है यहाँ पे। And he said something like, you know, you don't want my association. और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बात कही कि तो आपको मेरा संग नहीं चाहिए। Like I come here on behalf of the GBC to cut off your head. मैंने कहा मैं जीबीसी की तरफ से यहाँ पे आया हूँ आपका सर काटने के लिए। So I said, wow, that's an interesting hello. मैंने कहा ये तो बहुत दिलचस्प अंदाज है इनका, मुझे हेलो। He just said, oh, welcome to the temple. I'm glad you came. I hope I get your association. मैंने कहा स्वागत है आपका, मंदिर में आए हैं, मुझे बहुत खुशी है आपका संग पाके। And all he can say is, I just came here to cut off your head. और उन्होंने केवल एक
बात कही कि मैं आया हूँ आपका सर काटने on के लिए behalf of GBC. जीबीसी की तरफ से। I said, wow, my preaching must be very good, right? मैंने कहा लगता है मेरा प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, Why are they getting so uptight with me? क्योंकि मेरे ऊपर ऐसा गुस्सा क्यों है लोग? They're sending like these people to like save everybody from this very bad person, you know? क्योंकि वो ऐसे लोगों को उन्होंने भेजा मेरे जैसे आदमी से, व्यक्ति से बचाने के लिए सभी लोगों को। So what happened was he was like investigating, you know. तो फिर क्या हुआ, वो वहाँ पर जांच करने के लिए आए थे। Then I was giving the class Bhagavad Gita, and the place everything was packed. All the devotees are there. तो मैं भगवद गीता पे क्लास देता था एक समय, और उसमें पूरे भक्त भरे रहते थे वहाँ मंदिर में। So he said, "Okay, what time are you giving class?" तो उन्होंने पूछा आप कौन से समय में क्लास देते I हैं? said, "Maharaj, I'm speaking at 6 o'clock." मैंने कहा महाराज मैं 6 बजे क्लास देता हूँ। And he said, "Okay, I'll speak at 4 o'clock." तो उन्होंने कहा कि मैं 4 बजे में क्लास दूंगा। I said, "Okay, Maharaj. मैंने कहा ठीक है महाराज, कोई समस्या नहीं, You can speak anytime you want. आपको जब इच्छा है तब क्लास दीजिए। You're gonna cut my head off anyway, so you might as well speak anytime you want, you know." आप मेरा सर वैसे भी कभी भी काट सकते हैं, तो आप जब इच्छा तब आप जो बोलना है बोलिए। I didn't say that, मैंने ये नहीं कहा, but I was trying to still be nice, even though he wanted to cut my head off. मैं फिर भी उनसे अच्छा बर्ताव करने का प्रयास कर रहा था। वो मेरा सर काटने आए थे वहाँ। So he thought if he gives it 4, all the devotees will come there, right? तो उन्हें सोचा 4 बजे अगर मैं क्लास दूंगा तो सारे भक्त वहाँ आएंगे सुनने के लिए। So then he gives the class at 4, तो वो 4 बजे उन्हें क्लास देने के लिए वो आए। and so we all went to the class तो हम भी वहाँ पहुँचे क्लास just to encourage Maharaj. कि महाराज को थोड़ा अच्छा लगे। And he was talking about the sociology. वहाँ वो समाजवाद की बात करने लगे। And because I studied sociology, I said, "Oh, this is a nice sociology class, you know." क्योंकि मैंने भी समाजवाद के बारे में पढ़ा है, मैंने कहा अच्छा समाजवाद का अच्छा क्लास दे रहे हैं। I don't know what that has to do with the bhakti, but anyway, nice sociology class. You मुझे know? पता नहीं भक्ति के से क्या लेना देना है, लेकिन अच्छा समाजवाद का क्लास दिया उन्होंने। And then nobody really showing up there, you know. और कोई वहाँ आ नहीं रहा था फिर। So then I gave the class 6 o'clock, and then the place was packed with devotees. और 6 बजे मैं क्लास देने गया तो भक्त पूरा कमरा जो है भक्तों से पैक हो गया। And we're just speaking Bhagavad Gita as it is. और हम बस भगवद गीता बोल रहे हैं, No sociology class. कोई समाजवाद का क्लास नहीं कर रहे हैं। So then he's watching every day. Nobody's coming to his class, कोई भी उनके क्लास में आ नहीं रहा है, and everyone coming to our class. और सभी लोग हमारे क्लास में आ रहे हैं। So then he got disturbed with that, तो वो बहुत परेशान हो गए इससे। and he said, "Okay, I want to give it 6 o'clock." ठीक है, 6 बजे का क्लास मैं दूंगा। And I said, "Maharaj, you know, you're a senior devotee, you're GBC, you're Maharaj, you're Guru. आप वरिष्ठ भक्त हैं, आप जीबीसी हैं, आप महाराज हैं, गुरु हैं, मैं तो दास हूँ। You please speak at 6 o'clock." आप चाहिए 6 बजे क्लास दीजिए। Okay. ठीक है। So then I gave the class at 4 o'clock, और फिर मैंने 4 बजे क्लास दिया, and then he'll give it 6 o'clock. और वो 6 बजे देंगे। So nobody showed up for the sociology class, तो कोई समाजवाद की क्लास के लिए आया नहीं। and they all showed up at 4 o'clock सभी लोग 4 बजे की क्लास में पहुँच for गए, the Bhagavad Gita as it is class. जहाँ भगवद गीता यथारूप के ऊपर क्लास हो रहा था। So he was going to like completely bewildered. वो पूरी तरह से भ्रमित हो गए। And then he said, "What are you talking about in that class?" और फिर उन्होंने मुझे पूछा आप क्या क्लास में क्या I बात said, करते हैं? "Maharaj, we're just talking like how to get out of Maya, मैंने कहा महाराज हम बस बात करते हैं कैसे माया से how बाहर to निकलना है, surrender to Krishna." कैसे कृष्ण को शरणागत He करना said, "No, you should not be speaking like that. है। मैंने कहा नहीं ये सब बात नहीं करना चाहिए, It's not appropriate." ये सही बात नहीं है। So I said, "How, Maharaj? I don't understand." तो मैंने कहा महाराज ये कैसे, मुझे He समझ said, नहीं "No, आया। they should try to enjoy Maya. मैंने कहा नहीं माया का मजा लेने का प्रयास करना Right? चाहिए। Because if they try to get out of Maya, they might make some aparad." अगर माया से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो कुछ अपराध कर देंगे। So this is the Maharaj GBC telling like this. ये महाराज और जीबीसी ऐसी बातें कर रहे हैं। Enjoy your Maya. अपनी माया का मजा लो, Don't try to get out of Maya, माया से बाहर निकलने का प्रयास मत करो, because you might just offend somebody if you try to get out of Maya. क्योंकि किसी को बुरा लग जाएगा अगर आप माया से बाहर निकलने का प्रयास करें। And then you understand why he's speaking sociology instead of Bhagavad Gita, और right? आप समझ सकते हैं कैसे वो समाजवाद के ऊपर क्लास दे रहे हैं भगवद गीता के ऊपर क्लास देने के बजाय। Then on his table he has all books about Govardhan, and he's acting like he's, you know, gopi in separation. और उनके टेबल पे किताबें हैं गोवर्धन की, और ऐसा दिखा रहे हैं कि वो गोपी है, वीरा के They're भाव हैं। talking sociology and then going to the, you know, with the gopis, you know. वो समाजवाद की बात करते हैं और जो है वो गोपियों की तरफ व्यवहार करते हैं। And all the little girls that he had serving him in his apartment,
और वो छोटी छोटी लड़कियां जो हैं जो उनके अपार्टमेंट में उनकी सेवा करती थी, buzzing around. उनके आसपास घूमती रहती थी उस महाराज के साथ में। I said, oh, this is too advanced for me, you know. मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही उन्नत है। I better go enjoy Maya because I don't want to offend the Maharaj, you know. मैं जाके माया का भोग करूँगा, मैं महाराज के प्रति कोई अपराध नहीं करना So चाहता। that's all acceptable. ये सब स्वीकार किया जाता है। But Bhagavad Gita as it is, with absolute consideration, this is not acceptable. लेकिन भगवत गीता यथारूप तत्व विचार दृष्टिकोण से ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। It's influencing too many people. ये लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रभाव कर रहा है। This is problem. ये है समस्या। This is problem. यही है समस्या। So everything backwards. तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। Then they kicked us all out of the temple और फिर हम सभी को उन्होंने मंदिर से बाहर निकाल दिया। for our criminal activity. हमारी इस आपराधिक गतिविधि के लिए। And then when we were leaving, everybody had yantras and tantras, and everyone was like, Namaste Narashivaya. They were like thinking they're doing like an exorcism, you know. और जब हमें मंदिर से बाहर निकाला जा रहा था, तो ये लोग अपने तंत्र मंत्र और ये इस तरह गा रहे थे नमस्ते नरसिंह, जिनको लग रहा था कि किसी तरह से भूत भगाया जा रहा है। And we all just come down happily. और हम सब पूरे खुशी से नीचे आए थे। It's like a Prabhupada disappearance day. और प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस था वो। They kicked us out of the temple at before Prasadam at midnight. और रात के 12 बजे के प्रसाद के जस्ट थोड़ा पहले उन्होंने मंदिर से रात को बाहर Full निकाला। snowstorm. और बाहर में पूरी ठंड और बर्फीली हवाएं चल रही थी। So we're like, oh, this is an interesting leela of Krishna, you know. तो मैंने कहा अच्छा है, ये भी कृष्ण की अद्भुत लीला हो रही So है। we just got in the car. We started to drive somewhere. We don't know where we're driving. तो हम गाड़ी में बैठे और कहीं हमने जाना शुरू किया, हमें पता नहीं था हम कहाँ जाएंगे। And then the temple president, he was between me and the driver. और जो टेम्पल के प्रेसिडेंट थे वो मेरे और ड्राइवर के बीच में थे। And I asked Prabhu, why are you coming? और मैंने तो प्रभु से पूछा, प्रभु आप क्यों आ रहे हैं? And he said, I want to make sure you don't preach to my driver. उन्होंने कहा मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप हमारे ड्राइवर को भी प्रचार करना शुरू न करें। I need the driver, you know. ये ड्राइवर मुझे चाहिए। If you start preaching to him, I could lose my driver. You know? अगर आप मेरे ड्राइवर को प्रचार करना शुरू करेंगे तो मेरा So ड्राइवर he भी was हाथ से just चला sitting in the middle, so I wouldn't preach to the driver. तो वो मेरे और ड्राइवर के बीच में बैठे हुए थे ताकि मैं ड्राइवर से बातचीत न कर पाऊँ। That's true story. ये सच्ची घटना है बिल्कुल। That was fun. बहुत मजेदार था। What else? Anything else? और क्या और कुछ? Any last thing? कोई आखिरी चीज? Yes, Mataji. जी माता जी। Oh, bring the microphone. I'm just murdering the deviations. मैं जो है विमुक्ताओं की हत्या कर रहा हूँ। I thought I would introduce everybody to the other criminal in the room. Me. I'm sorry? I'm also, according to the GBC, a criminal. You're a GBC? No, I'm not a According GBC. to the They are GBC, saying I am a she's also one of the criminal class. Well, And I just happened to show up here you're welcome tonight. here. बता रही माता जी बता रही हैं जीबीसी के अनुसार मैं भी एक अपराधी हूँ। तो गुरुदेव बता रहे हैं आपको यहाँ स्वागत है। Yes, welcome to the criminal class. तो अपराधियों की जो ये क्लास हो रही है इसमें आपका स्वागत है। We're going to rob a bank tomorrow. कल हम एक बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हैं। They were even saying we're going to get all of our, well, I was saying we need a spiritual revolution. They warned everybody, the security, that we're going to show up at the GBC meeting with AK-47. मैंने कहा हम आध्यात्मिक क्रांति करने वाले हैं। उन लोगों को ऐसा लगा कि हम जीबीसी मीटिंग में AK-47 लेके आने वाले हैं। Seriously. ऐसा सोच रहे थे वो। That's how afraid they are. इतना डर है उन लोगों को। Why so fearful? इतना डर क्यों है? Of a 74-year-old little crippled lady. They're really fearful of me. Wow, what are you saying? You look like a nice lady. Why are they so threatened by you? कह रहे 74 साल की बूढ़ी महिला से वो लोग को इतना भय लग रहा है। गुरुदेव बता रहे हैं What is your crime? What is your philosophy? बताइए आपने क्या अपराध किया था और आपका क्या सिद्धांत है जो लोग आपको आपसे डरते हैं? My crime is that I'm publishing the original books of Srila Prabhupada. Oh my God! माता जी
मेरा अपराध है कि मैं श्रील प्रभुपाद के ओरिजिनल किताबों को छपवाती हूँ। That is horrible. ये बहुत ही आप खतरनाक That काम is कर so रही हैं। offensive. ये बहुत ही आपराधिक काम है। So if anybody would like an original this is our legacy, and I give them away free to initiated disciples only. Initiated disciples? Yes, somebody has to make a commitment, because I'm making the commitment myself to spend every extra minute, penny, etc. to help this project go on. So if somebody wants a book for free, they also would have had to make the commitment to be an initiated disciple. Initiated disciple of who? Of a guru in the line of disciplic succession. Oh, very interesting. That's a loaded महाराज जी कह रहे हैं कि मैं प्रभुपाद के ओरिजिनल किताबें उन भक्तों को देती हूँ जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की है। गुरुदेव पूछ रहे हैं किन से दीक्षा प्राप्त की है? जो इस प्रामाणिक परंपरा में गुरु हैं, उनको जिन्होंने अपना शिष्य Otherwise, they have to help me by paying the cost of the printing of the book. Anybody can purchase them by paying the cost of the book, but if they show that they have surrendered, then Can I ask you an honest question? तो मैं आपको ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। So, what is your understanding of bona fide representative of a person within the disciplic succession? I don't think we have time for that. Of course, Srila Prabhupada. Yes. Do you believe anyone after Prabhupada is bona fide authorized representative of Mahaprabhu's parampara? Well, the fruit proves it. The fruit is the proof. Fruit is the proof. Which fruit? Result is the The proof. person as the fruit, they are the proof. But what does Prabhupada say, who is bona fide authorized representative of parampara? Those people who are following. Those who? Those people who are following, they're bona fide. But everybody says they're following. तो महाराज जी कह रहे हैं जो भी प्रभुपाद का पालन कर रहे हैं वो प्रभुपाद के बाद के गुरु परंपरा में आते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं सभी तो कह रहे हैं वो प्रभुपाद को ही पालन कर रहे हैं। So how do we know who's really following? तो हमें कैसे पता चलेगा कौन असल में पालन कर रहा है? Everyone says they're following. सभी कह रहे हैं कि वो प्रभुपाद का पालन। Everybody says they're bona fide guru and parampara. सभी कह रहे हैं वो प्रमाणिक गुरु है परंपरा में। But we also know it's not true. हमें भी ये पता ये सत्य नहीं है। So Prabhupada says, to understand who's bona fide authorized representative in disciplic succession, you have to find out who the previous acharya ordered and instructed to be guru. श्रील प्रभुपाद ने बताया अगर आपको पता करना है प्रमाणिक अधिकार प्राप्त गुरु कौन है गुरु परंपरा में, तो आपको पूर्व आचार्य के पास जाना होगा कि इनको उन्होंने आदेश दिया, अधिकार दिया गुरु बनने के लिए परंपरा। So now it's true, some may say, well, I was ordered and instructed by Prabhupada. तो अब ये सत्य है, कुछ लोग ये कहते भी हैं कि हाँ मुझे प्रभुपाद ने आदेश दिया, अधिकार दिया, निर्देश दिया गुरु बनने के लिए परंपरा में। And then there's a question of, intelligence and faith from Paramatma Chetu Guru. अब प्रश्न उठता है बुद्धि और श्रद्धा चैत्य गुरु परमात्मा से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? And what is the effect, like you're saying, what is the effect of hearing from them? और जैसा आप बता रही हैं उनसे सुन के हमारे अंदर कैसा प्रभाव हो रहा है? So they Prabhupada said you must perfectly hear, perfect knowledge from perfect source. तो बात बताते हैं आपको पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से पूर्ण तरीके से श्रवण करना होगा। And of course Prabhupada said, do not change my books. और प्रभुपाद ने अवश्य ये कहा मेरे किताबों को बदलना मत। Why I'm effective, Prabhupada said, is that Krishna directly manifesting through this authorized Bhagavad Gita as it is. और प्रभुपाद ने कहा क्यों मैं इतना प्रभावकारी हो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे शब्दों के माध्यम से कृष्णा प्रकट हो रहे हैं इस भगवद गीता यथारूप के माध्यम से। So therefore the full potency of Mahaprabhu Krishna is coming through Srila Prabhupada in his presentation within his books and teachings. कृष्णा महाप्रभु की सारी शक्ति श्रील प्रभुपाद के माध्यम से उनकी किताबों उनकी शिक्षाओं के माध्यम से प्रकट हो रही है। So that trying to change that is proof of their not being bona fide.
तो इनको जिस तरीके से वो चीज़ों को परिवर्तन कर रहे हैं किताबों में, यही साबित कर रहा है कि वो प्रमाणिक नहीं है प्रभुपाद की तरफ से। And that if they have not heard from one who realizes what's in Prabhupada's books and teachings, they cannot understand it, neither they can preach it or speak it with any type of potency or effect. और अगर उन्होंने श्रवण नहीं किया, उसका साक्षात्कार नहीं किया किसी ऐसे व्यक्ति से जो, तो उनके प्रचार में, उनके बोलने में किसी तरह का प्रभाव नहीं दिखेगा, कुछ शक्ति नहीं दिखाई देगी। So Prabhupada said, if you perfectly hear perfect knowledge from perfect source, then your knowledge will be perfect. श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अगर आप पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से पूर्ण तरीके से श्रवण करेंगे तो आपका ज्ञान भी पूर्ण हो जाएगा। I don't have to worry so much because the disciples, not everybody is going to come and ask for a book from me because the person they took initiation from won't allow them to. We give you So I don't have to worry. we give you permission to give everybody here Prabhupada's original books. हम आपको यहाँ अनुमति देते हैं कि आप सभी को यहाँ पे प्रभुपाद की ओरिजिनल किताबें दे सकते हैं। Who here wants Prabhupada's original books? There you go. Thank you. आपका धन्यवाद। Thank you for your service. आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। So criminals are appreciating criminals. अपराधी जो है अपराधी की सराहना कर रहे हैं। That this is a criminal syndicate now. अभी अपराधियों का समूह बन चुका है। Right? When you put them together, then it becomes syndicate. जब वो एक साथ मिला दिया जाता है तो उनका समूह बन जाता है। Very nice. बहुत ही अच्छा। What are they afraid of? उनको डर क्या लगता है? The absolute truth. Absolutely. परम सत्य का। They're changing the words because the words are inconvenient to their scam. वो शब्दों को बदल रहे हैं क्योंकि वो शब्द उनके घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं। So if you can't, that's why like Mayavadis, they cannot deal with Srimad Bhagavatam. इसीलिए मायावादी श्रीमद् भागवतम से निपट नहीं पाते। Because it's too specific, detailed, presentation. क्योंकि बहुत ही विशेष और बहुत सारी जानकारियों के साथ उसको प्रस्तुत किया। You may take a Vedanta and twist around these meanings, but when you get to the commentary from the heart and realization and mouth of pure devotee, you cannot twist that around. तो वेदांत में शब्दों को इधर उधर फेर बदल किया जा सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो कि बहुत ही स्वाभाविक साक्षात्कार है, शुद्ध भक्त के हृदय से उनके मुख से निकला हुआ साक्षात्कार है, उसको It's too exacting. क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सटीक विज्ञान है। So they have their solution. We'll just cut out these words and meanings. उनके पास उनका समाधान है कि वो इस सारे शब्दों को काट के छांट के बाहर कर देते हैं And we'll just water the whole thing down. और सभी चीज़ों को पूरी तरह से पतला कर देते हैं। Prabhupada said, don't touch one thing. प्रभुपाद कहते हैं एक शब्द को भी छूना मत। But they don't listen to Srila Prabhupada. लेकिन वो श्रील प्रभुपाद को सुनते नहीं हैं। And Prabhupada said that's the problem with Gaudiya Math is that they didn't listen to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि गौड़ीय मठ के साथ भी यही समस्या थी कि उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात नहीं सुनी। And as soon as you don't listen to bona fide acharya and parampara, you become useless. और जैसे ही आप प्रामाणिक आचार्य जो परंपरा उनकी बात नहीं सुनते हैं, आप आसार हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। So useless, powerless, now you have to change the philosophy to bridge preaching. तो शक्तिहीन है, पूरी तरह से बेकार है, अब सिद्धांत को बदलना होगा ताकि आप ब्रिज प्रीचिंग करें। Because Prabhupada said, just if you can't do more than me, Prabhupada said, at least do what I'm doing. प्रभुपाद ने कहा अगर आप मुझसे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वो करो जितना मैंने किया। Don't manufacture anything, don't concoct anything. कुछ बनाने का, Don't कुछ change निर्माण करने anything. का, कुछ बदलने का प्रयास Just what I'm doing, just do that. जो मैं कर रहा हूँ केवल उतना ही करो। Chant Hare Krishna, Mahamantra, हरे कृष्ण do महामंत्र Hari कीर्तन Naam, करो, हरि नाम करो, right? And here Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Srimad bona fide Bhagavatam. authorized edition. भगवद गीता प्रमाणिक आधिकारिक एडिशन का Take prasadam, प्रसाद लीजिए, purify your heart and अपने consciousness. हृदय मन चेतना को शुद्ध कीजिए। Prabhupada said this is expert treatment program to purge the mad mind. प्रभुपाद कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ निपुण कार्यक्रम है पागल मन को शांत करने का। It's that simple. इतना सरल है, But because there's no purity, लेकिन उनके पास कोई शुद्धता नहीं है। Prabhupada said purity is the force. प्रभुपाद कहते हैं शुद्धता में बल होता So है। because there's no purity, there's no force. कोई शुद्धता नहीं है इसलिए कोई बल नहीं है। Therefore, now you have to water everything down इसीलिए सब कुछ पतला करना होगा so that people will come.
ताकि चला and लगा give सके money और पैसे डाल सके and worship these people और इन लोगों की पूजा हो सके as good as God. भगवान के जैसी पूजा And then they write autobiographies about themselves और वो खुद की जीवनी लिखते हैं and never mention their spiritual master's name. और अपने आध्यात्मिक गुरु का उसमें नाम तक नहीं डालते हैं So all of this type of cheating is going on. ये सब तरह की ठगी चल रही है And because we're calling it out, और क्योंकि हम इसको then we are persona non grata. तो हम जो है अंधेव का पालन कर रहे हैं We're not appreciated, we're not, they don't like us. और वो इसकी सराहना नहीं करते हैं और हमें पसंद भी नहीं करते हैं But as time goes on, people will realize I didn't come to ISKCON for an ISKCON psychologist. जब समय गुजरता है तो हम समझ पाते हैं मैं इस्कॉन मनोवैज्ञानिक के पास जाने के लिए I नहीं didn't come to ISKCON to worship demigods, मैं इस्कॉन में देवी देवताओं की पूजा करने के लिए नहीं or आया to do pranayama or hatha yoga, या प्राणायाम या हठ योग करने के लिए नहीं आया or to hug the trees. या पेड़ों को गले लगाने के लिए नहीं आया And we came here how to surrender and serve Krishna. हम यहाँ आए कैसे हम कृष्ण को शरणागत उनकी सेवा कर सकते हैं And we came because of Prabhupada's books and teaching. और हमारे प्रभुपाद की किताबों और शिक्षाओं के कारण That purity, that potency is what convinced us. और ये शुद्धता ये इसने हमें आश्वस्त किया And Prabhupada chanting Hari-katha Mahamantra to a bunch of drug addicts. और प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र नशे में धुत लोगों के सामने कर रहे थे Right? The lowest of the low. सबसे नीच लोग Right? And Prabhupada is so pure, his potency is so much, it's just penetrating through all of these covering, gross and subtle covering, and somehow or other, touching the heart and waking up the soul. लेकिन प्रभुपाद इतने शुद्ध उनकी इतनी शक्ति है कि उनके शब्द इनके सारे स्थूल और सूक्ष्म आवरण को चीरते हुए उनके आत्मा तक पहुंच के उनके आत्मा को जगा दिया He's just chanting Prabhupada in the park, chanting on the drum and playing kartal, chanting Hari-katha Mahamantra. प्रभुपाद उस बगीच में बैठ के करताल लेके ड्रम लेके केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं Even Prabhupada didn't really preach to everybody. यहाँ तक कि प्रभुपाद ने सभी लोगों को He प्रचार भी just नहीं किया chanted, hear holy name, take prasada. कीर्तन किया And gradually, he said, everyone wants to be happy, you don't know how to be happy because you have to serve Krishna to be happy. मैंने कहा आप लोग धीरे धीरे आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्यों नहीं आप कृष्ण को शरणागत सेवा कीजिए आप खुश हो सकते हैं So this is very, very simple presentation बहुत ही सरल तरीके से उनको समझाया because the candidates were very simple in their, understanding. क्योंकि अभी जो शिष्य हैं वो बहुत ही सरल है अपनी समझ में So we want to, they say, well, you're not part of ISKCON. वो कहते हैं आप इस्कॉन के भाग नहीं And I said, no, we are ISKCON. मैं कहता हूँ मैं हम ही हैं इस्कॉन You are the fake ISKCON. आप लोग नकली इस्कॉन हैं Because you have some buildings and some money and some power, that is not ISKCON. आपके पास कुछ बिल्डिंग है कुछ पैसा आ गया कुछ शक्ति आ गई इसका मतलब ये नहीं कि आप इस्कॉन हो ISKCON means those who have unflinching faith in Srila Prabhupada and the Guru Sadhu Shastra, Prabhupada's books and teaching. इस्कॉन का मतलब है जिनको प्रभुपाद में अटूट श्रद्धा है गुरु साधु शास्त्र और इनके शिक्षाओं And के they're trying their best to execute Prabhupada's instructions as it is to the best of their ability. और वो प्रभुपाद के निर्देशों को यथारूप में पालन करने का प्रयास करें अपनी श्रेष्ठ क्षमता से That's Prabhupada's ISKCON. ये है प्रभुपाद का इस्कॉन I asked the GBC chairman, he chastising me, that I asked Maharaj, what is the problem? एक बार जीबीसी के महाराज भी डांट रहे थे मैंने कहा महाराज क्या समस्या है I told him, I'm quoting Srila Prabhupada. मैंने कहा मैं तो श्रील प्रभुपाद की बातें करता हूँ And he said, yeah, but you're not quoting what we're quoting. लेकिन आप वो बात नहीं करते जो हम करते हैं You're not quoting what we're quoting. आप वो बात नहीं करते जो हम करते हैं So Mataji, this must be a very interesting experience for you to meet a bunch of fellow criminals. माता जी मुझे लगता है आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा आज आप अपने जैसे कुछ अपराधियों से मिले I had no idea in Mayapur there were so many criminals. माता जी कह रही मुझे पता नहीं था मायापुर में इतने सारे अपराधी हैं Well, Prabhupada is sending you to those personalities. तो प्रभुपाद आपको ऐसे व्यक्तियों के पास लेकर आए Because we have to make an alternative within ISKCON. क्योंकि हमें इस्कॉन के भीतर ही एक दूसरा विकल्प तैयार करना होगा
Because we all came because of Srila Prabhupada. हम सभी आए श्रील प्रभुपाद की वजह से. We all came because of Prabhupada's books. हम सभी आए श्रील प्रभुपाद की किताबों के कारण. So Srila Prabhupada made all of us, convinced all of us that he's pure devotee of Krishna. श्रील प्रभुपाद ने हम सभी को आश्वस्त कर दिया वो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं. And his presentation as it is means Krishna directly speaking to you. और उनकी प्रस्तुति यथारूप मतलब कृष्ण सीधे सीधे आपसे बात कर रहे हैं. So Krishna and Srila Prabhupada, they made us to surrender. तो कृष्ण श्रील प्रभुपाद ने हमें शरणागति करवाई. Because when I first read Prabhupada's Bhagavad Gita, I said, anybody who's following that Bhagavad Gita, that's a real devotee of God. क्योंकि जब मैंने पहली बार श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता पढ़ी, मुझे लगा जो भी इस भगवद गीता को असल में पालन करता है वो भगवान का शुद्ध भक्त. This is very serious personality. कुछ बहुत ही गंभीर व्यक्ति होगा. Then I said, is there anyone on this planet that is like that? और फिर मैंने सवाल पूछा, इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा है जो ऐसा पालन कर रहा I हो? need to meet them. I need to associate with them. मुझे वैसे व्यक्ति से मिलना है, उसका संग करना We है. need this type of association. हमें इस तरह का संग चाहिए. And even when I joined ISKCON, then I found out Prabhupada had, left his body. और जब मैं ISKCON से जुड़ा, तब मुझे पता चला कि प्रभुपाद ने अपना शरीर त्याग कर दिया है. But Srila Prabhupada, he said, these books, teachings, and my movement is for next 10,000 years. लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बताया मेरी किताबें, मेरी शिक्षा, ये आंदोलन अगले 10,000 सालों तक चलता रहेगा. So I just kept distributing Prabhupada's books. तो मैं प्रभुपाद की किताबों को I'm also a long-time book distributor. बहुत लंबे समय तक मैंने किताबें And I got पढ़ी. a lot of mercy from Srila और Prabhupada. मुझे श्रील प्रभुपाद से बहुत सारी कृपा मिली. Because of that book distribution उस seva, ग्रंथ प्रचार सेवा के माध्यम से. Prabhupada said this especially makes me very, very happy. प्रभुपाद बताते थे ये विशेष करके मुझे बहुत खुश करता है. And you give a special mercy for that. और उसके लिए बहुत विशेष कृपा मिलती है. So I just said, okay, Prabhupada's my guru. मैंने सोचा प्रभुपाद ही मेरे गुरु हैं. I had Prabhupada Murti. मेरे पास प्रभुपाद की मूर्ति थी. I did book distribution every day. मैं हर दिन ग्रंथ प्रचार करता था. Even as Grihastha. गृहस्थ होने के बावजूद. And I took care of Srila Prabhupada's rooms in Los Angeles, Watsika Ave Temple. और श्रील प्रभुपाद जी का लॉस एंजल्स में मंदिर है, उनके कमरे की मैं देखभाल करता था. And I was happy. और मैं बहुत खुश था. I don't need a guru, I have Prabhupada. मुझे गुरु की जरूरत नहीं, मेरे पास प्रभुपाद है. Then all of a sudden Srila Govinda Swami comes from India, from Bhubaneswar. और फिर अचानक से श्री गोविंद स्वामी महाराज भुवनेश्वर से भारत से आए. And devotees came and invited me to Maharaj's class. और भक्तों ने मुझे महाराज की क्लास के लिए निमंत्रण दिया. When I got home from book distribution. जब मैं ग्रंथ प्रचार करके वापस घर पर पहुंचा. And I said, no, I don't want to go to the class. और मैंने कहा मुझे क्लास में नहीं जाना. I said, no, you have to come to the class. उन्होंने कहा नहीं आपको क्लास I में आना said, चाहिए. I already heard all of these people. मैंने कहा मैं बहुत सारे लोगों से I'm सुन not चुका हूं. really so impressed by this. मुझे इतना कोई प्रभावित नहीं कर पाता. Prabhupada's my guru. प्रभुपाद ही मेरे गुरु हैं. And then my friend, he said, no, you have to listen to this Maharaj. और मेरे मित्र ने कहा नहीं आपको इस महाराज को सुनना चाहिए. He's different than everybody else. ये सभी से अलग है. And so because my friend asked me, I was like, all right. और क्योंकि मेरे मित्र ने मुझसे पूछा था तो मैंने So कहा I took ठीक a है. shower, I got dressed, I तो मैं went across नहाया, the street, कपड़ा लगाया और and रास्ता Srila पार करते हुए Govinda आया. Swami giving the class. और श्री गोविंद स्वामी महाराज क्लास दे रहे थे. So anyway, that's a whole nother pastime. ये और एक बहुत ही What अद्भुत year लीला है. was that? Do you remember? That was in 1992. और ये 1992 की बात Yeah, है. so you remember Ramdas Prabhu? Yeah? I'm his wife. Right! Right! अब रामदास प्रभु को जानते हैं, मैं I उनकी पत्नी हूँ. remember you. वो मुझे याद आ 23 years गया. older and Yeah. Do you remember me also doing that? yeah. तो आप Yeah. मुझे भी आप मुझे भी पहचान पा रही हैं? Right. What a small world, huh? All the criminals get together after such a long time. दुनिया बहुत छोटी है, सारे अपराधी आके वापस यहाँ मिल गए. Ramdas Prabhu had to retire from being Pujari in Los Angeles in 1995 because he had a heart problem. He had a health issue, right? Yes, he had a very terminal heart condition. They said the only way you can overcome this is with a heart transplant. He didn't want to do that. So we brought him to Vrindavan and he passed away in Vrindavan in the year 2000. And a few months before he passed away, Prabhupada came to him and told him, I want you to share my original books. So he thought, well, if Prabhupada's given me this duty to do, then maybe I won't die. Maybe I'll just travel around the world and share these books. Mm-hmm. And we started in a very, very, very tiny way, but he did pass away. Mm-hmm. So those of us who were there
we just, okay, well, the show has to go on. And Nice. Krishna really helped us in every possible way. That's awesome. Prabhupada is so merciful personality. We had we were almost $20,000 in debt and had absolutely no idea how to accomplish How that. to do what to do. Right. Yeah. What do we do? But Krishna made all the arrangements. Wonderful. That's a wonderful pastime. I'm very happy to meet you again. Something, you know, I felt like I know you somehow. मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको पहले से जानता हूँ. So as soon as you said like that, then I understood. I remember you. I was a little younger also. और मुझे याद आया कि हाँ मैं आपसे मिला था. मैं अभी उससे थोड़ा जवान था. But do you remember when Srila Govinda Maharaj came there in लेकिन 1992? आपको याद है श्रील गौर साहब 1992 में वो हमारे मंदिर आए थे. So I was not looking for any guru. तो मैं किसी गुरु को उस समय नहीं ढूंढ रहा था. Because I had Prabhupada. क्योंकि मेरे पास प्रभुपाद थे. And then Maharaj came in the room and then he said, when I came in the room, everybody chanted. और महाराज जब कमरे में आए उन्होंने कहा मैं जब यहाँ मंदिर में आया सभी लोग कीर्तन कर रहे थे. You're singing some songs, some bhajan. कुछ भजन गा रहे थे, कुछ गान कर रहे थे. But do you even know what are you saying? What are you singing? उन्होंने कहा आप लोगों को कुछ अंदाजा भी है आप लोग क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. So oh, Maharaj is speaking very boldly. उन्होंने कहा महाराज तो पूरी हिम्मत से बात करते हैं. Then he's telling you see, you're all deaf, dumb, and blind. और फिर महाराज ने कहा तुम सब अंधे, गूंगे, बहरे हो. And I thought, how do you meet somebody in 5 minutes he's calling you deaf, dumb, and blind, मैं सोचा 5 मिनट पहले से मिले हैं और अभी शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं कि हम अंधे और गूंगे, बहरे हैं. So anyway, I just, because time is of the essence, but I understood this is Prabhupada's mercy on me. और मैं किस तरह से ये समझ पाया कि ये असल में प्रभुपाद की कृपा है मेरे ऊपर. Because even though I thought I don't need a guru, क्योंकि मैं सोच भी नहीं रहा था कि मुझे गुरु की जरूरत है. Prabhupada knows you need a guru. प्रभुपाद को पता था कि मुझे गुरु की You need more help. मुझे और मदद की जरूरत है. Because just like we cannot perceive and understand and hear directly from Krishna, जैसे हम सीधे कृष्णा को देख उनको अनुभव उनसे सुन नहीं सकते उनसे बात how नहीं कर we're सकते. really going to be able to just directly hear from Srila Prabhupada? कैसे हम सीधे श्रील प्रभुपाद से सुन पाएंगे. So therefore Prabhupada, everyone says, from Ritvik camp, only Prabhupada. विशेष करके ऋत्विक कैंप से सभी लोग कहते हैं केवल प्रभुपाद. And then I said, well, you say you have so much faith in Srila Prabhupada. मैं इनको पूछता हूँ आप कहते हैं आपको श्रील प्रभुपाद में इतनी श्रद्धा है. But Prabhupada is not a personality that can qualify someone else to carry on his preaching mission. क्या प्रभुपाद किसी अपने एक व्यक्ति को योग्य नहीं बना सकते अपने प्रचार को आगे बढ़ाते रहने के लिए. Then what is your faith in Srila Prabhupada? तो आपको श्रील प्रभुपाद में फिर क्या श्रद्धा है. Srila Govinda Swami used to say, whatever pure devotee wants, whatever he prays to Krishna, Krishna immediately bestows it upon him. श्रील गौरव साहब बताते हैं कि शुद्ध भक्त जब भी कृष्णा से कुछ मांगते हैं कृष्णा तुरंत उसके पूरा कर देते हैं. So Srila Prabhupada, when he's leaving his body, prays to Krishna, Krishna, please empower someone, qualify someone, authorize someone so your mission can go on. Krishna cannot say no. तो अगर श्रील प्रभुपाद जाने से पहले अगर कृष्णा से प्रार्थना करें इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहने के लिए किसी को योग्यवान बनाने के लिए अगर कृष्णा से प्रार्थना करें तो कृष्णा उनको ना नहीं कहेंगे. So Srila Govinda Swami is such a personality. तो श्रील गौर गोविंद साहब महाराज ऐसे व्यक्ति हैं. And because most of them are not, और ज्यादातर लोग वैसे नहीं हैं, then Maharaj is a big threat to them. तो महाराज उनके लिए बड़ा खतरा हो गया. Because only he can expose them. और क्योंकि केवल वही उन लोगों का सच बाहर लेकर आ सकते हैं. So the Ritvik camp, that 90% of their understanding and realization and experience dealing with these other gurus is actually correct. और ये ऋत्विक कैंप के उनका जो 90% अनुभव बाकी गुरुओं के साथ जिस तरह का साक्षात्कार मिला है उन गुरुओं से ये बिल्कुल असल में सही है. It's only the conclusion is faulty. उनका निष्कर्ष बस गलत आया. Because they don't understand how Krishna or how Srila Prabhupada will continue his preaching mission. क्योंकि उनको ये समझ नहीं कैसे श्रील प्रभुपाद अपना प्रचार आंदोलन आगे करना जारी रखेंगे. And Srila Govinda Swami told and proved and showed how Prabhupada had ordered and instructed him
to take that responsibility. और श्रील गौर गोस्वामी महाराज ने बताया और दिखाया कैसे श्रील प्रभुपाद ने उनको ये आदेश दिया है, अधिकार दिया है इसको आगे जारी रखने के लिए। And he truly is a pure via medium of Krishna. और वो असल में कृष्णा का शुद्ध माध्यम है। So, like you said, that there's no better proof. जैसा आपने बताया कि इस फल से ज़्यादा बेहतर कोई And प्रमाण नहीं। ultimately, Krishna will give intelligence and faith who he is using to continue that preaching mission. और अंत में कृष्णा ही ये बुद्धि देंगे और श्रद्धा देंगे कृष्णा किसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रचार आंदोलन को आगे जारी रखने के लिए। So, very happy to meet you again after a long time. काफी लंबे समय के बाद आपसे मिलकर बहुत खुशी You हुई। seemed like too nice to be, like a criminal. देखने में आप अपराधी के तौर में आप बहुत ज़्यादा ही अच्छी अपराधी लग रही हैं। Sometimes, like the grandmothers, they have like some machine gun underneath their dress. Maybe she'll go with the AK-47. She'll come with us. कभी-कभी कोई बूढ़ी महिला होती है वो जो AK-47 छुपा कर रखती है और फिर बाहर निकाल के वो मीटिंग में चला रही होती है AK-47। Why are they so fearful? उनको इतना भय क्यों है? There must be something you're saying that is making them so fearful. अवश्य आप कुछ ऐसी बातें कर रही हैं जो उनको भय में डाल रहा है। So how presenting Srila Prabhupada as it is, original books and teachings, why are you afraid of that? तो श्रील प्रभुपाद के किताबों शिक्षाओं को यथारूप में प्रस्तुत कर रहा है। आपको उससे भय क्यों लग रहा है? कारण क्या हो सकता है इसके पीछे का? Because then if you compare the book and how they're changing it, then you'll see what is their aparad. क्योंकि जब आप देखेंगे कि मूल किताबें क्या है और नई किताबों को कैसे बदला गया है, तो आप देखेंगे किस तरह का अपराध कर रहे हैं। And then if you're even more sophisticated, you'll understand what they changed and why they changed that. और अगर थोड़ा और बुद्धिमानी से देखेंगे तो देख पाएंगे कि उन्होंने क्या बदला और क्यों उन्होंने ये बदला है। Because too much inconvenient truth is there. क्योंकि उसमें उनको बहुत ही असुविधाजनक सत्य बाहर आ So that has to be covered. It has to be, it has to be changed. It has to be, massaged into some other type of, understanding. तो उसको ढालने की जरूरत थी, बदलने की जरूरत थी या कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करने की जरूरत थी। So many times Prabhupada is talking about actually, factually, really. Prabhupada trying to emphasize what is it in tattva, in truth. तो प्रभुपाद ने कई बार कहा असल में, तत्व में, सच्चाई में, क्योंकि प्रभुपाद जोर देना चाहते थे तत्व के ऊपर। But they're not presenting it like that. लेकिन वो उसको ऐसा प्रस्तुत नहीं कर रहे। We're all disciples of Prabhupada. We're all parampara. हम सभी प्रभुपाद के शिष्य हैं, हम सभी परंपरा हैं। Know the science of Krishna. हम सभी गुरु हैं, हम सभी कृष्ण के विज्ञान को Wherever जानते you हैं। meet, tell them about Krishna. We're also guru. जिससे भी आप मिले उसे कृष्ण के बारे में बताओ, हम सभी गुरु हैं। So it's all going on. ये सब चल रहा है। And when you try to, dissect it and look at it in a more scientific way, this is not acceptable. लेकिन जब आप थोड़ा भेद लगा के देखने का प्रयास करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। I remember one time we had in Los Angeles, we had Ishtagosti. मुझे याद है हमारे लॉस एंजलिस मंदिर में एक बार इष्टगोष्ठी And I हुई। started telling certain thing and asking certain questions. तो और मैं कुछ बातें ऐसे बोलने लगा और कुछ सवाल उठाने लगा मीटिंग। And then our temple president afterward, he got me after the meeting. और मंदिर के जो प्रेसिडेंट थे वो मीटिंग के बाद मुझे लेकर गए। And he said, Murali, you obviously know like a lot of things that the other devotees don't know. उन्होंने कहा मुरली बहुत सारी ऐसी बात है जो जाहिर हो रही है कि तुम्हें पता है लेकिन बाकी भक्तों को पता नहीं है। We want to keep it that way. और हम चाहते हैं कि बाकी भक्तों को पता न लगे। And I was like amazed, और मैं चौंक गया ये सुन के। So you know a lot of things that these devotees don't know. So we want to keep them in ignorance. कि आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता है जो बाकी भक्तों को नहीं पता है और हम इसे ऐसा ही रखना चाहते हैं। And he said, we like you. He said, we like you. और उन्होंने कहा मुझे मुरली हमें तुम्हें बहुत पसंद हो। But if you continue to speak like this, लेकिन अगर तुम ऐसा ही बोलते we're रहोगे, going to have to send you to the farm. तो हम आपको खेती करने के लिए फार्म में भेजेंगे। And then I was thinking in LA, did we have a farm? और मैं Right? सोचने लगा, So what is? I feel like this is a mafia or something, मुझे लगा LA में हमारे पास तो We're going to have to फार्म send ही you नहीं to है। the farm. मुझे लगा माफिया का कोई At first I'm like, farms are nice. पहले सोचने में आया Cows are nice. फार्म And तो then I बहुत was अच्छा like, होता है, we don't have a farm. फिर मैंने सोचने लगा ओ हमारे पास तो This फार्म man नहीं is है। threatening me, ये व्यक्ति असल मुझे धमकी दे रहा है। Right? ऐसा है। It's called take them to the back of the barn and Take you to the back of the barn.
Right. That's the American saying. Yeah, There you take can it get to the confidential information. Or we'll take you swimming with some cement shoes, you या फिर know. वो कहते हैं हम आपको तैरने के लिए लेके जाएंगे लेकिन पैर में सीमेंट के जूते पहनाएंगे. It's a nice swim, you know, but it's heavy shoes, you know. अच्छे तरह हम तैरने जाएंगे लेकिन भारी जूते पहनाएंगे आपको. So I was serious that if anybody in the room wants one book, one original book, I will give my WhatsApp number. You can think about which original book you want. I have almost every title. Almost. You are dangerous. She's very dangerous. Half my room is a bookshelf. You can ask Ivan. तो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं. Floor to ceiling books. Okay? Awesome. But I'm not allowed to distribute or sell them within the compound. Although I live Within the matrix. right. माता जी कह रही है मुझे प्रभुपाद की मूल किताबों को भीतर में बांटने का मौका नहीं दिया जाता है. तो गुरुदेव बता रहे हैं इस मैट्रिक्स में आपको घुसने का मौका नहीं देते. Somebody who's written a book, or maybe their guru has written a book, they can have a little table, you know, out by Panchatattva Hall. Everybody has their little table. They're selling books, right? But I am not allowed to have a table there. Do you want our devotees to help distribute your books? आप चाहते हैं कि हमारे पास First of all, each one should get one book so they can appreciate these books. They already will appreciate those books. माता जी कह रही हैं गुरुदेव कह रहे हैं कि आप चाहते हैं हमारे बात तो आपकी मदद करें इन किताबों को लोगों तक बांटने के लिए प्रचार करने के लिए. What to do, Devaki, why don't you get Mataji's contact information and then get all the list of the books, right? And just be in contact with her. Mataji. So Devaki will get the contact information and let all the devotees know. तो देवकी आपका फोन नंबर लेकर बाकी भक्तों को बताएंगे. But see, we don't have to convince them or brainwash them because they're already brainwashed. हमें इन लोगों को ब्रेन वॉश करने का आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही ब्रेन वॉश हो चुके हैं सभी. So that's not the problem. तो यहाँ कोई समस्या नहीं है इसकी. Okay? ठीक है. Well, that's a surprise. ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य था. What else? और क्या? What do you want to say? आप क्या कहते You हैं? look awful active. She wants to distribute the books. She wants to sell the Prabhupada books. Of course. I took all of my savings, my last savings, when I got stranded during COVID in Mayapur, right? And I saved up a bunch of money to get back to America, and then I decided, why am I going back there? I don't need to go back there. What's nothing, there? right? Yeah. You know? So all that ticket money, I called up Vedaguya Prabhu and I said, okay, I'm making an order. And it's as much as I can fit in my room and still live there. So you bought the books? I bought a bunch of books, yeah. Awesome. Awesome. Well, you can, if you don't mind, you can associate with us anytime you want. Well, I'm so far past my bedtime. We all are. It's not funny, but sometimes I can come. But definitely I want everybody to get it. Yeah, anytime you want to come, that's nice. तो जब भी आप यहाँ आना चाहती हैं बहुत अच्छा है आप यहाँ से. And Devaki has everybody's contact, so he can be liaison for that. और देवकी के पास सभी का संपर्क है वो आपको सबसे संपर्क करा सकते हैं. But and also maybe we can also help distribute some of those books. और हम भी आपको मदद कर सकते हैं आपकी किताबों को लोगों तक बांटने के लिए. We can talk about that as well. और उसके बारे में भी हम आगे बातचीत कर सकते हैं. But if you try to bring that book inside of the temple, like some electric thing happens. लेकिन जब आप वो किताब जो है मंदिर के अंदर लेकर जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बिजली का झटका जाएगा. Police show up. तो कोई पुलिस माइंड पुलिस वहाँ आएगी. We feel like something criminal is going on here. हमें ऐसा लग रहा था यहाँ कोई अपराधी गतिविधि कर रहा है. Something too original. यहाँ कुछ ओरिजिनल चीजें प्रचार की जा रही है. We have to little joke about it, otherwise you're gonna just cry, you know. हमें इसके बारे में थोड़ा मजाक करना होता है वरना हम बस रोते रहेंगे.
So we're just trying to keep it alive, keep ourselves alive. तो हम इसको जीवित रखने का प्रयास करें, अपने आप को बचाए रखने का प्रयास करें, and just provide another alternative. और ताकि दूसरे लोगों को एक और विकल्प मिल सके. And we don't go chasing anybody down. We find that Prabhupada just sends those people to us. और हमें लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. प्रभुपाद और कृष्ण उन लोगों को अपने आप ही हमारे पास भेजेंगे. So we're doing more like an organic way. तो हम बिल्कुल ही मूल तरीके से करने का प्रयास Because करें. we don't want everybody. क्योंकि हम सभी लोगों को नहीं जमा We करना want the right people. हम सही लोगों को जमा करना चाहते हैं. Otherwise, these other people are completely disturbed. They're bringing a lot of baggage. वरना ये बाकी लोग जो है पूरी तरह परेशान है अपना. Or they just want to make money. Huh? Or they just want to make money. Exactly. या फिर वो बस पैसे कमाना चाहते हैं इसलिए वो यहाँ पे आते हैं. So yeah, we don't need all of that. तो हमें उन सभी की जरूरत नहीं है. Prabhupada said, try to find some innocent, sincere people, some simple-hearted people. प्रभुपाद का कुछ नादान, कुछ एकनिष्ठ, कुछ सरल हृदय वाले लोगों को ढूंढो. Don't try to preach to all of these complicated people. ज़्यादा जटिल लोगों को प्रचार करने का प्रयास मत करो. This is for the simple-hearted. ये सब सरल हृदय वाले लोगों के लिए. If they're simple-hearted, non-envious, they'll immediately accept it. अगर सरल हृदय वाले That's true. And if they're simple-hearted and non-envious, when you put an original book in their hands, they're changed. They see it and they like it. Exactly. I don't judge them. I don't judge who they took initiation from or what their background is or anything. But I just see when you give them that book, what happens if they drop. Oh, it's a Ritvik book. Oh, I can't touch that. It's a Ritvik book. Or they look. Oh, this is an original book. Oh, it's original. Right. Well, the problem is with the Ritvik, like I said before, the conclusion is faulty. और जैसे मैंने आपको बताया ऋत्विक के साथ समस्या यह है कि उनका निष्कर्ष गलत है. And so, unfortunately, the Ritviks are also trying to, distribute original books. और समस्या यह है कि ऋत्विक जी भी जो है श्रील प्रभुपाद के मूल They किताबों don't को distribute प्रचार करने का प्रयास enough. करते हैं. Trust me. Yeah, I'm sure. I'm on the distribution end, and they don't order as many books as they should. Right. But Their line doesn't equal their activity. If they're following Prabhupada, then why aren't they distributing his book? Right. Well, they also have no potency. उनके भीतर भी कोई शक्ति नहीं है. Because they're disconnected. क्योंकि वो उनका संपर्क. So there's no spiritual potency amongst that camp as well. तो उनके कैंप में भी कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है. And then the problem is, then they're also offensive to those who are really Prabhupada followers and authorized representatives. और उनकी समस्या ये है उनके प्रति भी अपराध कर रहे हैं जिनको प्रभुपाद ने अधिकार दिया है, प्रमाणिक व्यक्ति बनाया है. So they have no power, no proper right consciousness, they're misunderstanding the conclusion. और उनके पास ना शक्ति है ना सही समझ है और वो निष्कर्ष भी गलत समझ रहे हैं. And then to make it worse, they're offending bona fide authorized representatives of Prabhupada. और उससे बुरा ये हो रहा है कि प्रभुपाद ने जिनको प्रमाणिक व्यक्ति नियुक्त किया है, they're lumping everybody together. तो वो सभी को एक समूह मान रहे They're हैं. not making any type of distinction, not the mistake they're making. तो वो किस तरह का भेद नहीं पता लगा पा रहे हैं और ये गलती वो कर रहे हैं. And we have many people who were Ritviks coming from Ritvik camp. और हमारे पास बहुत सारे लोग जो ऋत्विक कैंप से आए हैं. And they were not satisfied there. और वो वहाँ संतुष्ट नहीं थे. So, but because they love Prabhupada and they're faithful to Srila Prabhupada, then Prabhupada somehow sends them to us. और क्योंकि वो प्रभुपाद से प्रेम करते थे, प्रभुपाद के प्रति थोड़ी श्रद्धा थी उनके प्रति, तो प्रभुपाद ने उनको हमारे पास भेज दिया. So we're like, we love original books, but we're also not advocating or even, not even appreciating. We're not accepting the deviation of that camp. तो हम प्रभुपाद मूल किताबों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये जो दूसरा कैंप है जो सिद्धांत को पालन नहीं करता है, हम उसका समर्थन भी नहीं कर रहे हैं. But if it's Prabhupada, directly Srila Prabhupada, that's all we talk about is Prabhupada. तो श्री प्रभुपाद जो सीधे निर्देश हैं, हम केवल उसी के बारे में ही बात करते हैं. So we're not bound by some kind of institutional, restriction. तो हम किसी संस्था के दबाव में आके काम नहीं कर रहे हैं. We're thinking outside of the box. हम बक्से से बाहर निकल के सोच रहे हैं. We're not just fanatical, like institutional robots. तो हम इस तरह से अनुयायी नहीं हैं रोबोट की तरह संस्था के. That's how Prabhupada was successful in his mission. He thought out of the box. Exactly.
That's why Prabhupada said that because I was ordered and authorized by my spiritual master, then Mahaprabhu and his devotee gave me intelligence how to do, what to do, to spread this preaching mission. And my godbrothers, they don't have that intelligence. They don't have that empowerment to be able to do what I'm doing. प्रभुपाद ने बताया मुझे आदेश अधिकार प्राप्त हुआ महाप्रभु और कृष्ण परंपरा के सारे भक्तों से मुझे बुद्धि प्राप्त हुई, शक्ति प्राप्त हुई, कैसे प्रचार करना है, क्या करना है। और मेरे गुरु भाइयों को ये शक्ति बुद्धि प्राप्त नहीं हुई महाप्रभु की परंपरा से, तो उनको समझ में नहीं आया कैसे प्रचार करना है। So they're preaching basically to steal people from Prabhupada's ISKCON. तो असल में ये लोग इन लोगों का प्रचार प्रभुपाद के ISKCON से लोगों को चुरा के ले जाते हैं। Otherwise, why don't you put your spiritual master's books on the street, people distributing your spiritual master's books, and just make brand new people to join your movement. Why don't they do like that? वरना वो फिर अपने गुरुओं की किताबें लेकर रास्ते में लोगों को बांट कर उनको आकर प्रचार करके भक्त क्यों नहीं बनाते हैं? वो यहाँ के भक्तों को चुरा के क्यों भक्त बना रहे हैं? So it's disconnected. क्योंकि उनको कोई संपर्क नहीं है परंपरा से। So we're trying to stick to the original teachings and the instructions in Prabhupada's books and teachings, and we're trying to just be focused and dependent on that guidance. तो हम केवल मूल निर्देशों के ऊपर के साथ बने रहने का प्रयास करें, मूल शिक्षाओं और निर्देशों के ऊपर उनको पालन करते रहने का हम प्रयास करें। Sometimes that means presenting unpalatable truth. और इसके लिए कई बार हमें जो है हजम न करने वाली सत्य को प्रस्तुत भी करना होता है। For these people, they're very thin-skinned. क्योंकि इन लोगों की चमड़ी बहुत पतली है। They're very fearful. इनको भय बहुत लगता है। So they have to, if there's no love and affection and faith, you have to use, fear, intimidation, and laws. तो अगर प्रेम, स्नेह और श्रद्धा नहीं है, तो आपको भय और शक्ति बरतनी पड़ेगी लोगों को नियंत्रित करने के लिए। Because otherwise you cannot control the masses. वरना लोगों को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। And those who are too wise, intelligent, open-minded, they have to be kicked out of the institution. जो ज़्यादा बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, उनको जो है संस्था से बाहर निकालना पड़ेगा। Because they're a threat. क्योंकि वो खतरा है। It's like any revolution, any communist revolution or fascist revolution, you have to get rid of the smart people. तो जैसे कोई साम्यवाद क्रांति हुई, किसी भी तरह की क्रांति में जो बुद्धिमान लोगों को पहले बाहर निकालना पड़ता है। You have to silence them. उनको चुप करना पड़ता है। So who can't be brainwashed and controlled, then they are a threat. तो जिनको ब्रेन वॉश नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, वो एक खतरा बन जाता है। They are the criminals to the state. तो वो राज्य के प्रति खतरा बन जाता है। That's why they throw them in the gulag. That's why they throw them, either kill them or throw them in the concentration camp. तो इसीलिए या तो उनको मार दिया जाता है या फिर उनको किसी कैंप में जाके भेज दिया जाता है। Because they're too smart. क्योंकि वो ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं। And then if they're too smart, they're too influential, they are too persuasive in their presentation, this is a threat to the regime. तो वो अगर ज़्यादा बुद्धिमान है, उनका प्रभाव बहुत सारे लोगों के ऊपर है, तो वो एक नेतृत्व के खिलाफ खतरा बन जाते हैं। So you know all of this thing. आपको ये सारी बातें पता है। I'm preaching to the choir. In the church, they have people who are singing in the church, and then you're preaching to those people. They're already in the church singing, right? तो मैं उन लोगों को प्रचार कर, जैसे चर्च में होती है, बताया जाता है जो लोग चर्च में गाना गा रहे होते हैं वो पहले से ही चर्च में हैं, तो हम उनको प्रचार कर रहे हैं। Like they're already joined. तो वो लोग पहले से ही जुड़ चुके हैं। So you're preaching to the people who already have faith. वैसे लोगों को प्रचार किया जा रहा है जिनके पास पहले से ही श्रद्धा है। So thank you very much, Mataji, for coming. बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी आपका यहाँ आने के लिए। Now Devaki will get that information from you. और देवकी आपसे सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। And we'll try to indoctrinate everybody into Srila Prabhupada's original Hare Krishna movement. तो हम श्रील प्रभुपाद के मूल हरे कृष्ण आंदोलन में सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। I tell them that they say we're not part of ISKCON. I said no, we are ISKCON. जब वो कहते हैं कि आप ISKCON के भाग नहीं है, मैं कहता हूँ हम ही ISKCON हैं। You're not part of ISKCON. आप लोग ISKCON के भाग नहीं हैं। Who says that because they have some power they can determine who's ISKCON, who isn't ISKCON? तो उनके पास अगर थोड़ी शक्ति आ जाएगी तो वो क्या निर्धारित करेंगे कौन ISKCON में कौन ISKCON में नहीं है? And then half the people were previously excommunicated, और now they're gurus. और आधे जो लोग हैं उनमें से जो गुरु हैं उनको पहले ISKCON से बाहर निकाला गया था। And now those people are going to say who's ISKCON, who's not ISKCON. और अब वो लोग बताएंगे कौन ISKCON है और कौन ISKCON नहीं है। It's ridiculous. ये सब फालतू बात है। So I don't take it seriously. मैं इसे बातें गंभीरता से नहीं लेता। I could not take it seriously. मैं गंभीरता से ले ही नहीं सकता हूँ इनकी बात। We can be respectful.
हम सम्मान कर सकते हैं, but we don't have to take it seriously. लेकिन गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. All right, any last thing? ठीक है, कोई आखिरी चीज? Thank you. Hare Krishna. धन्यवाद. We made Mataji happy tonight. हमने माता जी को आज रात खुश किया, Because then she met, a family of devotees who have a similar, mindset. एक ऐसे भक्तों के परिवार से मिले जिनकी मानसिकता एक जैसी है. Prabhupada said the birds of the same feathers, they flock together. कहते हैं एक समान वाले पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं. We just got to find the right birds. हमें that's all. सही पक्षियों को ढूंढने की जरूरत है. So we're flying around, but we're not really fitting in with the other birds. हम उड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्षी के साथ हम मेल नहीं खा पा रहे. So anyway, Prabhupada finally brought his birds back together again. इस तरह से प्रभुपाद ने अपने पक्षियों को एक जगह लेकर आ गए. They make slogans like, "This is a Prabhupada's ISKCON," और वो स्लोगन बनाते हैं, ये है प्रभुपाद का ISKCON. Right? This is a Prabhupada's ISKCON. ये प्रभुपाद का So ISKCON. if you say it like this, then that's the real ISKCON. तो इस तरह से बोल देंगे तो क्या So प्रभुपाद this का is ISKCON हो all जाएगा? nonsense. ये सब फालतू बात है. So anyway, it's been a very interesting evening. इसलिए बहुत दिलचस्प आज की शाम थी. You have now joined the criminal syndicate. आप आपराधिक समूह से जुड़ चुके हैं. It's official. औपचारिक रूप से. Did you know you were joining the criminal syndicate? क्या बोला था आप आपराधिक समूह से? But it doesn't look worried about it. लेकिन इनको चिंता नहीं हो रही है आपराधिक. Isn't Krishna like making you scared? Why are you so happy? कृष्णा को डरा क्यों नहीं? अभी तक खुश कैसे हैं? Sometimes you have to make a little joke to make a point as well. कभी-कभी हमें थोड़ा मजाक करना पड़ता है किसी बात को रखने के लिए. Everybody, thank you very, very much. सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. Srila Prabhupada ki, Srila Gauritai ki, Srila Gurudev ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Gaura Premananda ki, Hari Hari Bol. Srila Gurudev ki. Jai Prabhupada Gurudev. Don't hurt her. How did he go from an elephant to a buffalo? Yes. हाथी से भैंस तक कैसे पहुंचे? What do you prefer, retarded elephant? Take a pic. That's really. Hare Krishna, everybody. Send it out. All right, everyone all right? Better? We have to talk at some point, right? You're here for a couple days? All right, we'll discuss everything. All right? Hare Krishna. Hare Krishna.